Hello, hello. May I request you all to kindly take the seats because already chief guest of the function and other dignitaries they have arrived. So it's a sincere request. Please occupy your seats. हेलो तो आप आगे all are requested to kindly occupy the seats please because dignitaries they have already started from associate dean's chamber, so it may take hardly few seconds to reach. So you all are requested to kindly occupy the seats please.
A very warm good morning to one and all. It's an honor itself to honor this beautiful audience who have gathered here physically from every nook and corner of our country. Lately, there has been two brought joy to the city of Nagpur. One, the recent arrival of monsoon bringing much respite to the scorching summer heat, and second, the galaxy of distinguished veterinarians of India descending in Nagpur has brought the city to limelight. We, Dr. Sandeep Chaudhary and Dr. Shiny Joy, welcome you all to the Orange City of Nagpur on behalf of 20th Annual Convocation cum Scientific Convention of National Academy of Veterinary Sciences, organized jointly by NAVS India, New Delhi, Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur, and Nagpur Veterinary College, Nagpur, for the inaugural function on restructuring veterinary education, research and enhancing livestock and poultry production to boost the GDP. सुप्रभात. ऐसी प्रभात आज की न भूतो न भविष्यति. एक वाइब्रेशन, एक लहर, एक पॉजिटिव लहर ये सारे ऑडिटोरियम में, ये मंच पे, और ये पॉजिटिव लहर हम तो बोलते हैं कि नागपुर वेटनरी कॉलेज नागपुर ये हमेशा से एक ऐसा लकी इंस्टीट्यूट रहा है जहाँ के एल्यूमनाई, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हॉल में पता होगा कि डॉक्टर मोहन जी भागवत है. तो ये हमेशा ये गोल्डन फीदर ये इंस्टीट्यूट के क्राउन में हमेशा ही रहेगा. सो वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट थिंग सर. ऑनरेबल डॉक्टर मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आज इन्होंने चीफ गेस्ट का पदभार यहाँ पे संभाला है. उनके साथ में ऑनरेबल श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑन डायस वी हैव डॉक्टर एन पी दक्षिणकर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर, कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़, and member of Veterinary Council of India, New Delhi today. We have Colonel Professor M. Paturkar, Honorable Vice Chancellor, MAPSU, Nagpur, who will preside over the function. We have Honorable Dr. D.V.R. Prakash Rao, President, National Academy of Veterinary Sciences, New Delhi. We have Dr. Tarun Sridhar, former Secretary, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries, Government of India. And on dais, Dr. Sharma, Secretary, NAVS. And we have Organizing Secretary Dr. Nitin Kurkure, who is Director Research of MAPSU, on the dais. First and foremost, I request the audience kindly stand for MAPSU University song. विश्वे अग्रेसरे भारते प्रगतं महाराष्ट्र राज्यम्. विश्वे अग्रेसरे भाणां तु ज्ञानप्रदं मत्स्य पशु विज्ञान कार्ये निरतमिदं मम विद्यापीठम्. निरतमिदं मम विद्यापीठम्. निरतमिदं मम to light the traditional lamp before we begin our program.
a full-time pracharak of RSS by 1975. He served in various posts in RSS and finally chosen as Sar Sangchalak in 2009. He was awarded honorary doctor in NAVS, Nagpur. He is still going strong as chief of RSS, which is the progenitor and leader of large body of organization called the Sangh Parivar, which has presence in all facets of Indian society. May I request again Dr. M. Paturkar sir, Honorable Vice Chancellor MAPSU, to kindly felicitate guest of honor Shri Rupalaji, Union Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Shri Parshottam Khodabai Rupala is a member of Rajya Sabha representing the state of Gujarat Legislative Assembly from Amreli and formerly served as Minister in Government of Gujarat. Before entering politics, after his education, he has served as school principal and chief officer of the Amreli municipality. He served 3 consecutive terms. He has worked as a cabinet minister in Narmada for irrigation and water supply and agriculture, chairman of Public Accounts Committee of Gujarat Legislative Assembly and also of Gujarat Industrial Development Corporation. As Rajya Sabha member, he worked in various committees and became the Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare before becoming Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. I'd like to request Honorable Dr. D. I'll request again Honorable D.V.R. Prakash Rao sir, President NAVS, to kindly felicitate Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Honorable Shri Rupalaji. Yeah, this was a request from NAVS that would like to felicitate both of them. Thank you very much, sir. I'd like to D.V.R. Prakash Rao, a veterinarian, is PhD from University of Madras, Chennai, and is a leading scientist and industrialist in feed supplement industry over the last 4 decades. He is the founder, chairman, and managing director of Prakash Foods and Feed Mills Private Limited, that is pioneer in protein technology catering to the requirements of poultry industry of the country. He is associated with several societies, universities, and associations. His business acumen has led his company to great heights that exports to other countries as well, thus honored with awards such as Outstanding Achiever Award, National Unity Award, Award for Successful Entrepreneur, and Distinguished Lifelong Achievement Award. I'll take this opportunity again to request Dr. Kurkure sir, Organizing Secretary, to kindly felicitate Honorable Vice Chancellor Dr. M. Paturkar sir. I'll request Dr. Kurkure sir to please go ahead with felicitation of Dr. N.P. Dakshinkar sir, Vice Chancellor, Dao Shri Vasudev, yes, even our teacher, yeah, definitely sir, Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh. Dr. Narayan Purushottam Dakshankar, a teacher par excellence, PhD in veterinary medicine, has got more than 35 years of experience in teaching, research and extension in the field of veterinary sciences. He headed this college and also served as Director of Instructions and Dean Faculty of Veterinary Science in MAPSU, Nagpur. He was associated with 14 research projects, more than 160 research publications in national and international journals, and 65 books in veterinary science to his credit. He is recipient of numerous awards and is holding lead positions in various associations and societies. He is popular with the print media, radio, and television, contributing more than 200 lectures and informative activities. I'd like to request now Dr. Somkur sir, who is co-organizing secretary, to kindly felicitate Honorable Vice Chancellor and President of today's function, Dr. M. Paturkar sir. Dr. Ashish Motiram Paturkar, alumni of Nagpur Veterinary College and PhD in Veterinary Public Health, has more than 26 years' experience of teaching, research and extension. He has served Bombay Veterinary College from assistant professor to associate dean and has guided 33 MBSc and 5 PhD students and has handled as many as 29 research projects funded by national and international agencies. He has 3 patents in his name, besides 57 research articles and several books to his credit. Professor Paturkar is a life member of 7 professional associations and is a recipient of as many as 16 awards of national and international repute.
Yes. May I request again Dr. Upadhyay sir, Chairman of Organizing Committee, to kindly felicitate Major General Dr. M.L. Sharma, Secretary General NAVS. I'd like to request Dr. Saadpure sir to kindly help us in getting felicitation to Dr. N.V. Kurkure. Saadpure sir is Dean Lower Education of Maharashtra Animal and Fishery Sciences University. I'd like to request him that he should felicitate Dr. N.V. Kurkure, who is Organizing Secretary. And Director of Research, MAPSU as well. Honorable Colonel Dr. Professor M. Paturkar sir, Vice Chancellor, MAPSU Nagpur, for his welcome address. Sir, please. Honorable Dr. Mohan Bhagwatji, Sarasangha Rashtriya Swayamsevak Sangha, and an illustrious alumnus of Nagpur Veterinary College, Honorable Sri Purushottam Rupalaji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Because of some elections, Dr. Honorable Sri Sunil Kedarji could not come because of these elections, and also Honorable Dr. Sri Dattatreya Bhardeji also could not attend because of election. Dr. D.V. Prakash Rao, President, NAVS, Padma Shri Dr. M.L. Madan sir, Padma Shri Dr. K.K. Sharma sir. Unfortunately, again, Dr. Umesh Chandra Sharma, President VCI, could not attend because of his sad demise of his mother. Major General M.L. Sharmaji, so Dr. Dakshinkar, all the dignitaries sitting in front of me, all the ex-vice chancellors, present vice chancellors, press, media, ladies and gentlemen. Indeed, it is an honor for MAPSU to host such a momentous and prestigious scientific congregation at Nagpur, a galaxy of eminent scientists, academicians, present and former vice chancellors and industry persons have descended on Nagpur for this important event. The MAPSU fraternity feels greatly honored and join me in expressing the gratitude and sharing the pleasure of being with you on this auspicious occasion. On behalf of entire MAPSU family, I cordially welcome you all with great humanity and highest appreciation
to this famous city of oranges and tiger capital of Maharashtra. For 20th annual convocation comes Scientific Convention of National Academy of Veterinary Science on restructuring veterinary education, research and extension for enhancing livestock and poultry production to boost the GDP at MAPSU, Nagpur. We are proud to be associated with the noble profession that serves our country, rural economy in terms of income generation, employment, agricultural sustainability, diversification, and foreign exchange earnings. India has a vast resource of livestock and poultry, which plays a pivotal role in the sustainable development of rural masses. As per the 60th survey of NSS, 16.44 million workers are engaged in livestock and fishery activities. The livestock sector has continuously been growing at the compound annual growth CAGR of 7.93% from 2014-15 to 2020-21. Agricultural crop sector contribute 8.96% of the total GVA, whereas the livestock sector contribute 4.90% of the total GVA in 2021. Agricultural diversification through animal husbandry is one of the primary drivers of growth in rural incomes, and its livestock sector can play a pivotal role in doubling farmers' income. The state government established this MAPSU on 3rd December 2000 with its headquarters at Nagpur for sustainable management, conservation, and augmentation of livestock resources of the states, including fisheries. The university imparts quality education in veterinary, dairy technology, and fishery sciences. From its inception until the last convocation in November 2021, the university has awarded more than 8,500 degrees to the students. I take this opportunity to briefly present the silent achievement of the university during last 5 years. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, has sanctioned 3 Krishi Vigyan Kendras under the MAPSU at Nagpur, Sangli, and Thane district. The ICR under Scheduled Caste Sub-Plan SCSP ICR EFC scheme has sanctioned Skill Development Center at MAPSU, Nagpur, with a total financial outlay of more than 2 crores. With the persistent effort and persuasion of MAPSU and ICMR, Indian Institute of One Health has been sanctioned in Nagpur with MAPSU as a knowledge partner worth rupees 200 crores. The university has signed MOU with the University of Adelaide, Australia, Penn State, USA, and Washington State University, USA, for collaborative research and academic activities. The university also signed 17 MOUs with various national institutes and industries to popularize the technologies developed by the university and conduct collaborative need-based research program. The Embryo Transfer Technology Laboratory is established under the Rashtriya Gokul Mission, New Delhi, with the financial outlay of in vivo and in vitro embryo production in indigenous cow breeds is the prime objective of this project. The work of the laboratory is in full swing. During last year, 9 calves have been born at the Card Cattle Breeding Farm with the help of ETT, and 6 cows are pregnant at our farm using ETT. The Center of Excellence for Advanced Research on Animal Food Safety is also established at Mumbai Veterinary College, Mumbai, with the total financial outlay of rupees 15 crore under the World Bank funded ICR NAVS project. The university also actively participated in COVID-19 control program. The ICMR approved laboratory at Nagpur Veterinary College, Nagpur, processed more than 25,000 dairy technology and ranked second at national level in 18-19. Last year, the university secured the first position under the veterinary and fishery sciences 10 PGs for securing highest PG scholarship during AIEEA PG 2021 online counseling. Veterinary graduates only contribute more than 1% of the technical and science graduates.
Yet the livestock sector contributes over 4% of total GDP and around 26% of the total agricultural GDP. Although agricultural universities comprise approximately 9% of all the universities in the country, enrollment of agriculture and allied science is less than 1% of all enrollment in higher education. Both capacity and quality of agriculture and allied discipline must be improved to increase agriculture and livestock productivity through better skilled graduates and technicians, innovative research, and market-based extension linked to the technologies and practices. The National Education Policy 2020 has tried to address the issue, though the implementation of NEP 2020, the design of agriculture education will shift towards developing professionals with the ability to understand and use of local and traditional knowledge and emerging technologies while being cognizant of critical issues such as declining land productivity, climate change, food sufficiency for our growing population, etc. However, being a professional course, implementation of NEP 2020 in veterinary education, being a professional course, implementation of NEP in veterinary education needs to be thoroughly rediscussed. Further, the role of stakeholders, which VCI and ICR also need to be defined as professional standard setting bodies. The theme of 20th Convocation cum Scientific Convention of NAVS is appropriately focused on the core issues. Around 20 eminent veterinarians will be receiving fellowships of NAVS today. The Padma Shri awardee veterinarians, Honorable Dr. M.L. Madan, Dr. K.K. Sharma, and Dr. Sasama Ayape will be felicitated at this event. Apart from this, the honorary fellowship will be bestowed upon Honorables Dr. Mohan Bhagwatji, Honorable Sri Purushottam Rupalaji, Honorable Sri Sunil Kedarji, and Dr. Tarun Sridhar. I extend my heartiest congratulations to all the fellows awardees. It will be great to hear our keynote speaker on core issues. The speakers are uniquely placed in the technical session to ignite constructive debate, discuss and highlight the key points and recent trends in animal husbandry sector. We are fortunate enough to get supported by the group of sponsors, some of whom we will also hear interact with the discuss in coming technical session. The organizations such as prestigious national event is a gigantic task. I sincerely appreciate and acknowledge the valiant efforts, foresight, and meticulous planning put in by the convener, chairman, and sparing his valuable time for this event. I also thank Honorable Sri Purushottam Rupalaji for his benign presence. I am also thankful to Honorable Sunil Kedarji, Pro-Chancellor of MAPSU, for his unstinted support and strategic guidance in all our endeavors. He is the main driving force behind us, not letting us relax till we achieve our goals. We have tried our level best to arrange the things to make your stay comfortable and pleasant in Nagpur. Since no one is perfect, there may be some lacunas in organization. I request you to kindly bear with us. I hope you will enjoy our stay in Nagpur. Thank you for your patent listening. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, Honorable Sir. That was MAPSU in glance and other activities of NAVS also he has elaborated. When there is a scientific deliberations and gathering, definitely, that is a try that we should be having a compendium format something so that it will be ready to use, ready to read for everybody. So, it has been taken care that there should be a compendium, and I'd like to request the guest on the dignitaries on the dais to kindly release the compendium, please.
Dr. DVR Prakash Rao, President, National Academy of Veterinary Sciences, India, New Delhi, to deliver his address. Honorable Shri Dr. Mohan Bhagwatji, President Rashtriya Science Sevak Sangh, esteemed chief guest of the inaugural function, Honorable Shri Parshottam Rupalaji, our Cabinet Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, guest of honor, Dr. Dakshinankar, Vice Chancellor, Member of VCI, Honorable Shri Dr. Tarun Sridharji, IAS, Member Central Administrative Tribunal and former Secretary, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Honorable Padma Shri awardees, Professor Dr. M.L. Madanji, Professor Dr. Kushal Sharmaji, Colonel Dr. Professor Ashish M. Paturkarji, Honorable Vice Chancellor of MAPSO Nagpur, Vice Chancellors of Veterinary Universities, both serving and retired, Honorable Dr. B.N. Tripathi ji, DDG Animal Science, ACR, New Delhi, past Presidents of National Academy of Veterinary Sciences, Honorable Dr. S.K. Ranjan ji, Dr. A.M.L. Pathak ji, and Major General Srikant Sharma ji, distinguished members of the Governing Council and fellows of the Academy, ladies and gentlemen, good morning, namaskar. I am honored and privileged to address this august gathering of accredited intellectuals in veterinary sciences and the top dignitaries of the country sitting on the dais. It's a matter of great pride that Sri Dr. Mohan Bhagwatji is a veterinarian and a highly accomplished leader heading the Sir, the entire veterinary fraternity in general, the Academy and me as a president in particular are proud of your achievements and look forward for your guidance to lead the profession to greater heights. I am grateful for your esteemed presence this morning as the chief guest. Honorable Shri Parshottam Rupalaji, our Cabinet Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, is meticulously involved with his keen interest guiding the growth and development of animal husbandry sector for a higher contribution of GDP in the country from the time he has taken over the ministry. Sir, I am grateful for your kind presence this morning as the guest of honor in spite of your busy schedule and official engagements. Animal husbandry is one of the fastest growing sectors, contributing over 33% of GDP of agriculture and 4.11% to overall national GDP through its products like milk, meat, eggs and wool, employing around 21 million people, approximately 8.8% of Indian population. The animal husbandry sustains livelihood of farmers in climatic adversities when agriculture fails, thus providing food and financial security to the rural farmers, avoiding suicides. This sector contributes around 12 lakh crores to the GDP of the country without much of subsidy from the government. It is a self-sustaining sector with a fast-growing sector of the economy at a compound annual growth rate of 8.2% CAGR over the past 5 years, which is on par with manufacturing sector and much more than agriculture, which grows at 1.5 to 2%. The current value contribution of the dairy industry is estimated around 8.5 lakh crores to the national GDP, more than rice and wheat put together. The dairy sector has been registering a consistent growth of over 6%, increasing from 22 million metric tons in 1970 to over 200 million metric tons as on date. It is estimated that the production of dairy sector would be excess of over 300 million metric tons by 2025. The poultry industry in India is a major success story. Thanks to the efforts of the scientists involved in breeding, feeding management, and the industry for having successfully transformed a backyard poultry into a vibrant industry, contributing to an annual turnover of over 2 lakh crores. India is the third largest egg producer in the world after China and USA, and the fourth largest broiler producer after China, Brazil, and US. Looking forward, the Indian poultry industry is expected to grow at a CAGR of 15.2% till 2026. The liberalized economy has increased the purchasing capacity and the living standards in the country. Dietary preference for more protein foods such as meat, milk, eggs, and chicken has increased compared to cereals. India has produced 114 billion eggs per annum with a growth rate of 6 to 7% on egg production. Broiler production is 4.3 million tons per annum with a growth rate of 8 to 10%. Gentlemen, that is the greatness of this industry, which has grown so well in the last 10 years' time.
National Academy of Veterinary Sciences of India is a premier apex pan-Indian body consisting of elite veterinary professionals, that is the vice chancellors and deans of veterinary universities, serving and retired directors of national veterinary research institutes, outstanding veterinarians from the army, corporate sector, and other esteemed scientists involved in the administration of veterinary sciences, education, and research, both at national and state levels. NAVSI was established in 1993 by late Dr. C.M. Singh, who was a doyen of the veterinary profession, with similar objectives like that of National Academy of Medical Sciences and National Academy of Agriculture Sciences. Dr. C.M. Singh was a great visionary and visualized the importance of animal husbandry activities in the human food chain in a populous country like India. NAVSI did not have support from Ministry of Agriculture or Department of Agriculture Research, DARE, Department of Agriculture Research Education. There was no support from ICR any time to the Academy, and the Academy always suffered a stepmotherly treatment for any issues highlighted. It's unfortunate that the veterinary education research in ICR system has never got the due, although it is a significant contribution of agriculture to GDP is 1/3. It should not be out of place to mention here that veterinary sciences were equated to a minor subjects. The curriculum of veterinary degree is 5.5 years duration as against 4 years of agriculture degree. As a matter of fact, the veterinary graduates compare themselves to medical graduates both at center and state level cadre and even for admission in their respective colleges, but the system of ICR is strikingly different. The recruitment of directors for veterinary institutes is not being done with a basic degree in veterinary science, since the committee constituted by ICR stipulates such a conviction to express their views. It is irritating to see that outstanding veterinary scientists are available in this country. Such a big talent is available with such a big network of 15 veterinary universities and ICR research organizations. The appointment of directors without a basic degree in veterinary science is still being continued. The leadership of a non-veterinarian at the helm of the affairs in veterinary and animal science research affects the growth and development of veterinary and animal husbandry activities due to lack of comprehensive abilities to redress the issues pertaining to veterinary research as a whole. I am not complaining anything about this, but it is only for the interest of the profession which awarding marks is now removed, where some other fellowships like medical and engineering were included. NAVSI has never got any financial assistance as on date or even a proper office. NAVSI owes its existence to the veterinary universities and donations from corporate members, thanks to people like Professor Faturkar, who is hosting this. NAVSI cannot afford to do this function unless a veterinary university comes to its rescue. Our Honorable Minister Shri Purushottam Rupalaji has agreed to look into the possibilities of financial assistance to the Academy. The Academy has a small room, and most of the time we survive by requesting others for a conference room, even for our regular day-to-day meetings. I request Honorable Shri Rupalaji to help us to provide an office space and financial assistance to the Academy. I have to state here, although I don't know so many details about this, that the non-practicing allowance of the veterinary scientists, which was paid earlier, has now been stopped in some institutions of ICR, and also it is affecting as well scientists as well as the pensioners of the veterinary profession. A committee was established in June 2019 by competent authority recommending a new council to undertake research, education, extension, and related activities in the veterinary and fisheries sector under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The opinion from the experts of the veterinary, animal husbandry, dairying, and fisheries were sought. Based on the recommendations, sir, a document drafting committee was constituted to pool the ideas and finalize a draft on the formation of a separate council under the name Indian Council of Veterinary and Fisheries Research. Sir, the committee has recommended that the new council ensure systematic research, education, training, and extension to sustain development of veterinary, dairying, animal science, fisheries, and other allied sciences. It should not be out of place to mention here that I was also on the committee, and Honorable Dr. Tarun Sridhar was the secretary at that time. Probably he'll be able to highlight some of those points much better than me. The idea was the institutes of ICR engaged in the two sectors should be shifted to the new council along with the policy institutions currently functioning within the two departments. But this proposal is still pending. Hence, I appeal to Honorable Shri Dr. Mohan Bhagawatji, President RSS, Honorable Shri Purushottam Rupalaji, Cabinet Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, to carve out veterinary and fisheries research institutes as Indian under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. I am sure under the dynamism of our Honorable Minister,
will have a promising growth in animal husbandry activities, which has a potential to contribute 20 lakh crores in the next 5 years from the existing 12 lakh crores. Gentlemen, this is a fantastic achievement. This is a gold mine. We are not exploiting it. Because being a scientist, I was in the United Nations. I have seen this world. The importance inside the world is something different. And I think if we give that importance here, I'm sure 20 lakh crores is not a big target in the next 5 years. I take this opportunity to request both the dignitaries once again to look after the academy's interest. Thank you very much, sir. My apologies for my statements. And also, in the Agriculture Scientist Recruitment Board, there is no veterinarian as a recruiting person. It's also difficult for non-veterinarians to understand how a veterinarian can be evaluated. I again leave it to the submit for their request for their looking into the subject. Jai Hind, thank you very much. Thank you so much, sir. That was a vision, of course, from NAVS to consolidate and some of the matters, of course, and this is a dais, of course. And thank you so much for doing on behalf of veterinary community, I must say. Next, I would like to call upon Dr. Tarun Sridhar, former Secretary, AD of Government of India, for ICVFR activities. So please. माननीय श्री रूपाला जी, केंद्रीय मत्स्यिकी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, आदरणीय श्री भागवत जी, सर मुझे आज ही पता लगा कि आप भी वेटरनरी साइंटिस्ट हैं। मैंने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर जो है वो आर्ट्स में की हुई है, पर मुझे भी साथियों ने ऑनररी वेटरनरी साइंटिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया, तो बड़ी खुशी हुई सर। डॉक्टर प्रकाश राव, डॉक्टर पातुरकर, मेजर जनरल शर्मा, डॉक्टर कुरकुरे, डॉक्टर दक्षिणकर, सॉरी सर, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहुत ही सम्मानीय साथी, शुभचिंतक, मित्र और भारतवर्ष के वेटरनरी साइंस के डॉयंस, 10 मिनट वहाँ तक मेरी जानकारी है ICVFR नाम की कोई भी संस्था नहीं है। तो जब संस्था ही नहीं है तो उसकी गतिविधियां क्या होंगी? तो इस पर मैं क्या बोलूं? सर, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश राव जी ने प्रकाश डाला था अभी। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतवर्ष में पशुपालन, डेयरी, मत्स्यिकी हमेशा ही कृषि क्षेत्र का एक अभिन्न अंग मानकर इसका शासन किया जाता रहा है। और ये गलत नहीं था, क्योंकि भारत में जो कृषि है इसकी मिश्रित कृषि की एक अनूठी मिसाल भारत पेश करता है। संभवतः शायद ही कोई किसान होगा भारतवर्ष में जो पशुपालन नहीं करता, ऐसे ही शायद ही कोई पशुपालक होगा जो कृषि नहीं करता। अतः हमेशा यही समझा जाता था कि शासकीय दृष्टि से इस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो सामने आया। फिर मुद्दे जो हैं दोनों के अलग अलग होने लगे। कृषि क्षेत्र का हिस्सा रह के और कृषि मंत्रालय का हिस्सा रहकर धीरे धीरे पशुपालन और मत्स्यिकी को जो एक केंद्रीयकृत जो एक अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जो एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे मिलनी बंद हो गई। दूसरा, एक और जो बहुत विचित्र स्थिति पैदा हुई, रूपाला जी मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं कि राजनीतिक स्तर पर यदि किसी को पशुपालन मंत्रालय दिया जाए, वो समझता था कि शायद मुझे पदक्रम में नीचे रखा गया है, और मेरे जैसे अधिकारियों को यदि पशुपालन विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव बनाया जाए तो हम कहता था कि मेरा कैरियर चौपट हो रहा है, ये क्या होगा। तो इस सारे जो है इस परिप्रेक्ष्य में जो एक ध्यान इस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा था। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री ने एक ध्येय रखा, किसान की आय को दुगना करना। जब किसाई की आय को दुगना करने का एक राष्ट्रीय ध्येय सामने आया, तब यह एहसास होना शुरू हुआ कि किसान की आय दुगनी तभी हो सकती है यदि पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्यिकी जो है इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। फिर यह चीज मैंने खुद ऑब्जर्व करनी शुरू की कि अचानक जब भी कोई केंद्र में मीटिंग बैठक होती थी, मैं प्रदेश की ओर से भी मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में हिस्सा लेने आता था। फिर जब केंद्र में सचिव रहा तब भी प्रधानमंत्री की बैठकों में मुझे बहुत मौका मिलता था। तो जो भी प्रधानमंत्री महोदय बैठक संबोधित करते थे, चाहे वो मुख्यमंत्रियों की बैठक हो, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हो, सचिवों, मुख्य सचिवों की बैठक हो,
उसमें मैंने एक चीज़ नोट करनी शुरू की कि हर बार मात्स्यिकी और पशुपालन का कम से कम जिक्र ज़रूर आता है। तो पहली बार लगा कि पशुपालन और मात्स्यिकी की बात होनी शुरू हो गई। फिर 2019 में एक विस्तृत चर्चा के पश्चात, तब माननीय रूपाला जी कृषि राज्य मंत्री थे और राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री थे, तो 2-3 बैठकें हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में और यह निर्णय लिया गया कि मात्स्यिकी एक अलग क्षेत्र है। मात्स्यिकी की जो समस्याएं हैं और मात्स्यिकी के जो प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं वो पशुपालन डेयरी से अलग हैं, तो मात्स्यिकी विभाग को पशुपालन और डेयरी से अलग किया जाए। और मैं इस बात में अपना बहुत सम्मान महसूस करता हूं और गर्व भी महसूस करता हूं कि जो इस मात्स्यिकी विभाग को अलग करने का जो प्रथम नोट बनाया गया था, जो रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें मेरा भी एक योगदान था। तो ये मेरा ख्याल फरवरी या मार्च 2019 में मात्स्यिकी विभाग को पृथक करके अलग विभाग बनाया गया, अलग सचिव नियुक्त किए गए और 2 महीने के पश्चात ही नया मंत्रालय बन गया, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज को उल्टा कर दिया गया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ताकि क्योंकि फिशरीज जो है वो एक अलग कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हमारे फिशरमैन वगैरह हैं, तो एक ये संदेश भी था कि हम फिशरीज को भी उतना ही महत्व देंगे जितना कि हम डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री को अब तक देते रहे हैं। तो ये बहुत ही 2 ऐतिहासिक निर्णय हुए और इस निर्णय का सबसे पहला जो इसका क्या आउटकम क्या हुआ, एक मेरे ख्याल 15-16 हज़ार करोड़ का फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया। और फिर पहली बार ऐसा हुआ 2019 में जब नई सरकार बनी, वही पुरानी सरकार दोहराई गई, जो इसकी पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस पहली बैठक में पहला एजेंडा क्या था, नेशनल डिजीज इरेडिकेशन, एनिमल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसके लिए फिर डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री अलग विभाग हो गया, फिर ये बना के एक मंत्रालय अलग हो गया। अब अगला स्टेप था कि इसको जो रिसर्च और एक्सटेंशन सपोर्ट मिलती है, जो कृषि विभाग को और कृषि मंत्रालय को देता था ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, अब पशुपालन और मात्स्यिकी मंत्रालय को ये सपोर्ट कहाँ से दी जाएगी। तो तीसरा निर्णय यह था कि इसके लिए एक अलग से अनुसंधान बनाया जाए, इंडियन काउंसिल फॉर फिशरीज एंड वेटरनरी रिसर्च, और वेटरनरी और फिशरीज रिसर्च। नाउ दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन इन प्रिंसिपल टेकन। सर, उस समय मुझे यह आदेश दिया गया कि क्योंकि आप इस मंत्रालय के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, क्योंकि सर आप तब सरकार में तब आप नहीं थे, मैं इस मंत्रालय में 5 साल संयुक्त सचिव भी रहा था, क्योंकि मैं 5 साल इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहा था। फिर प्रदेश में इस एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मंत्रालय विभिन्न समय पर देखता रहा था। हालांकि प्रदेश में तो सजा के तौर पर यह महकमा दिया जाता था, पर मैं खुशी से ग्रहण करता था। और फिर मैं केंद्र में मुझे सौभाग्य मिला इस मंत्रालय का सचिव बनने के लिए, तब मुझे ये कहा कि आप जो है इसकी रूपरेखा आप तैयार कीजिए। अब सर ये बात है जून की, मई के आखिरी सप्ताह में सरकार बनी थी 2019 में, 31 जुलाई को मेरी रिटायरमेंट थी। तो मुझे ये कहा गया कि क्योंकि आप इस मंत्रालय को अच्छी तरह से जानते हैं, इस सेक्टर को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, और क्योंकि मात्स्यिकी विभाग और इस मंत्रालय के गठन की रूपरेखा में आपका योगदान रहा है, आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो ICVFR की रूपरेखा भी आप बनाइए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो अब 1.5 महीने के बाद तो रिटायर हो रहा हूँ। पर तब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ये आदेश हुआ कि कुछ तो आप बना के चले जाइए, ताकि आपके आने वाला जो है सक्सेसर जो है उसको कोई कठिनाई ना हो। और गिरिराज सिंह जी ने भी कहा कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपने ये बना कर ही जाना है। तब आप में से कई लोग जो हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। हमने 3 या जनरल साहब थे, डॉक्टर राव थे, अब कई लोग थे, और कई लोगों से मैंने अनौपचारिक रूप से चर्चा की थी, डॉक्टर पाठक वगैरह थे। तो हमने 3-4 बैठकें की आप लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कुछ किसानों के साथ करके, और एक इसकी विस्तृत रूपरेखा ICVFR की तैयार करके वहाँ पे मंत्रालय में छोड़ दी। अब अगला स्टेप क्या होना था कि उसके साथ एक कैबिनेट नोट बनना था, और वो कैबिनेट नोट जो है प्रोसेस से सर्कुलेट होने के बाद मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाना था। इस स्टेज पर क्या हुआ उसके बारे में मुझे अब जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो इस क्षेत्र को स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता अधूरी है। हमने एक महल खड़ा कर दिया, एक परिवार खड़ा कर दिया, पर यह कहा कि इस आपको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन तो आपका पड़ोसी ही आके देगा, उसकी मेहरबानी पे आप रहोगे।
आज स्थिति सर क्या हो गई है, अब मेरे पास विश्वसनीय आंकड़े तो नहीं है, पर जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं ये है सर, अगर आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्रालय से एक बार ये थोड़े से आंकड़े मंगवा लीजिए। पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है सर कि जो ग्राफ है एलोकेशन इन ICAR टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, वो ऐसे 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 जाता जाता बिल्कुल धरातल पर पहुंच गया है। आज ICAR के पास जो बजट है वो लगभग 8,500 करोड़ है सर। अभी डॉक्टर राव ने कुछ आंकड़े आपके समक्ष उत्पादन के रखे। जो सर कृषि का जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका 30% से अधिक हिस्सेदारी उसमें पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी की है। तो कम से कम 30% जो वित्तीय सहायता है ICAR की, रिसर्च की, एक्सटेंशन की, वो इस सेक्टर को जानी चाहिए। चलिए 30 नहीं जाए 25 चली जाए, 25 ना जाए 20 चली जाए, 20 ना जाए 10 चली जाए। सर आज 2 से 2.5% पैसा जो है ICAR का, मात्र 2 से 2.5% पैसा जो है वो मात्स्यिकी और क्षेत्र में लग रहा है। सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसके पीछे ICVFR क्यों नहीं बनाया जा रहा, या कोई भी ऐसी संस्था क्यों नहीं बनाई जा रही कि जो इस सेक्टर को एक्सक्लूसिवली सपोर्ट करे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इसके पीछे सिर्फ यह है कि मेरी संपत्ति में से हिस्सा क्यों जाए, मात्र इतनी सी बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि ICVFR होनी चाहिए, मेरा एक सैद्धांतिक बात है कि जब आपने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है कि ये एक पृथक मंत्रालय होगा, एक पृथक क्षेत्र है और इसको हमने प्राथमिकता देनी है, तो इसको रिसर्च और एक्सटेंशन की सपोर्ट भी इंडिपेंडेंट देने में क्या दिक्कत है, वो उसके लिए उसको दूसरी तरफ ना निर्भर रहना पड़े। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग अस एज अ अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर। आज हम ग्लोबल लीडर हैं विश्व में, चाहे दूध ले लो, पोल्ट्री ले लो, मछली ले लो, ये कर दो, हम शीर्ष पर ही बैठे हैं। पर सर हम शीर्ष पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी संख्या बहुत है। हम शीर्ष पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हमारा प्रबंधन बहुत बेहतर है। हम शीर्ष पर मात्र इसलिए हैं कि अब इन्होंने बताया 200 मिलियन मीट्रिक टन, 200 मिलियन मीट्रिक टन दूध हम पैदा कर रहे हैं सर। नंबर 2 पे है अमेरिका 98 मिलियन टन कर रहा है सर, हमसे आधे से भी कम है। पूरा यूरोप एक साल में जितना दूध अपना इजाफा करता है उससे ज्यादा हम अकेले करते हैं सर। पर अगर हमारे पशु की उत्पादकता ली जाए तो हम सबसे नीचे हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ शेयर नंबर्स दैट वी आर सिटिंग ऑन टॉप। सर कितना अच्छा हो कि यदि हम 200 मिलियन टन दूध जो है, जो आज हमारा पशुधन है उसके 25% पशुधन से ही 200 मिलियन टन दूध पैदा कर ले, तब देखिए किसान की आय दुगनी क्या सर चौगनी हो जाएगी। किसान की आय तब चौगनी हो जाएगी। ये तभी संभव है यदि हमारे को ये रिसर्च और एक्सटेंशन की सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिले। एंड सर आई कैन से इट विद ग्रेट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। और पीछे ये जो विश्व पशु चिकित्सा संगठन जो है, पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट टीम भारत आई थी। उन्होंने कोई 1 साल में 3 या 4, 1-2 साल तक दौरे करते रहे, 5-6 दौरे किए, 2-2, 3-3 महीने के दौरे। वो मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक गए, गुजरात से लेके बंगाल तक गए, बिहार, हर स्टेट में उन्होंने विजिट किया, सारा किया। उनको ये कहना था कि जितनी चुनौतियां भारतवर्ष में हैं, दुनिया ये पशु चिकित्सा और पशुपालन के प्रबंधन के क्षेत्र में, ऐसी चुनौतियां विश्व में कहीं नहीं हैं। पर फिर भी जिस तरह से यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द हाई क्वालिटी ऑफ द वेटरनरी मैन पावर इन द कंट्री। दिस इज देयर रिपोर्ट सर, एंड इट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सर जब हमने एक निर्णय ले लिया है, हमारे कदम थम क्यों गए? जो हमने एक सफर चालू किया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग दिस सेक्टर, इसको इसके जो लक्ष्य तक जो है, ध्येय तक पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत बहुत आवश्यक है। क्षमा चाहूँगा मैंने काफ़ी समय लिया, क्योंकि मेरे को आखिरी समय पर इस कार्यक्रम के बीच में डाला गया। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। किसी एंगल से ये लगा नहीं कि सर वेटनरियन नहीं है। यदि ब्लाइंडली मैं उनको सुनता शायद तो लगता कि है वेटनरी का ही सारा कोई जो साइंटिस्ट है वे बात कर रहे हैं। और सर वेरी राइटली सेड, आपने पहले ही क्षमा मांग ली और रिटायरमेंट होने का बड़ा फ़ायदा उठाया सर। बट देन इट इज़ नीडेड एक्चुअली। और हम आपको धन्यवाद देंगे सर कि आपने इस मंच का पूरे बोलते ना फुल बिल्कुल यूटिलाइजेशन किया। एंड ऑफ कोर्स वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल डायस टू काइंडली सी इनटू इट।
थैंक यू सो मच सर। इसके बाद में मैं डॉक्टर प्रकाश सर को आमंत्रित करता हूं, जो ऑनरेरिस फेलोज NAVS के हैं, उनका डिक्लेरेशन के लिए। सर आइए प्लीज। Friends, I feel conferring these honorary fellowships on Dr. Mohan Bhagwat ji and Rupala ji, the Academy is honored by accepting this. I feel I'm privileged and blessed by God at this age to do this act, for which I really feel grateful to him. So, with a few words, I'll start reading out their citations. Dr. Mohan Madhukar Bhagwat was born in Marathi family in Chandrapur, the then Bombay state of India. Dr. Bhagwat ji completed schooling from Lokman Tilak Vidyalaya. He graduated in veterinary science and animal husbandry from Government Veterinary College, Nagpur. Inspired by freedom fighters like Lokmanya Tilak ji and Shahid Bhagwat Singh, Dr. Bhagwat always wanted to serve the country in one way or the other. The inherent inspiration finally prompted him to drop out of his postgraduate course in veterinary sciences, and he became a full-time pracharak of Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS towards the end of 1975. His commitment to the organization and dedicated work has seen him rising to the position of Sarsang Chalak, Chief Executive of the RSS in 2009. Dr. Bhagwat was decorated with an honorary degree DSE conferred by the Maharashtra Animal and Fishery Science University in 2017. We heartily congratulate him on this. The NAVS India congratulates Dr. Mohan Madhukar Bhagwat ji for his outstanding achievements and feels happy to confer on him the honorary fellowship of the Academy. I would be honored now. I would be honored to give the fellowship to him. The next honorary fellowship is being conferred on our cabinet minister, Shri Purushottam Rupala Kodabai Rupala ji. Shri Purushottam Kodabai Rupala ji was born on 1st October 1954 at Ishwariya in Amreli district of Gujarat. He did his BSc from Saurashtra University, Rajkot in 1976 and B.Ed from Gujarat University, Ahmedabad. He started his professional career as a high school principal before joining the active politics in 1988 as the president, Amreli district BJP, and rose to become national vice president of the party. His parliamentary career started as a member of Gujarat Legislative Assembly in 1991, representing Amreli for 3 consecutive terms. He was a minister in government of Gujarat from 1995 till 2002, holding responsibilities for water resources, agriculture, and cooperation and departments. In 2021, Shri Rupala has visited many countries, like in various capacities, including Israel, England, Nepal, Kenya, China, Hong Kong, USA, Sudan, Russia, Italy, Argentina, Cyprus, Bulgaria, Czech Republic, Myanmar, and recently Brazil. His clear vision and perfect understanding of the needs of the masses has helped him to bring effective changes that have benefited the common man in political as well as social spheres. Shri Rupala has always adopted an all-encompassing approach, overall approach. And the NAVS India congratulates Shri Purushottam Rupala ji for his outstanding achievements and feels happy to confer on him the honorary fellowship of the Academy.
The third fellowship, Dr. Tarun Sridhar, who has been conferred recently, doctorate by Gadavasu. This is another honorary for him after retirement. I think one is Gadavasu did it, and there is the honorary fellowship from this academy, because he has contributed so much as a bureaucrat for this profession. He has spent more than a decade in animal husbandry activities. Sri Tarun Sridhar was born on July 13, 1959. Currently member Administrative Council, Central Administrative Tribunal. He is retired from Indian Administrative Service in July 2019 and has rich experience related to rural and public affairs. His contribution in the field of animal husbandry is phenomenal, considering various positions he has held while in service. It includes Secretary and Joint Secretary, Ministry of Fisheries and Animal Husbandry, Dairying, Government of India, Additional Chief Secretary and Principal Secretary, Department of Animal Husbandry and Fisheries, Government of Himachal Pradesh. He was closely involved in creation of the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, Government of India in 2019, and closely connected to the initiatives related to the modern reproductive techniques, disease, FMD and brucellosis control, dairy infrastructure fund and national dairy plan. While serving the Himachal Pradesh, he was actively involved in activities related to milk cooperatives, genetic improvement of indigenous breeds, and outreach program for livestock farmers. Furthermore, he has a great contribution to the fisheries sector as well. Sri Sridharji, an avid writer involving agriculture, rural affairs, and livestock fisheries and dairy sciences, both mainstream and technical publications. Sir, I am a regular reader of your articles, very thought-provoking things. I'm sure you're doing a great job after retirement. The articles relate to diverse subsectors like health, concept, fisheries, and aquaculture, economy of poultry, post-retirement from IAS. Sri Sridhar is actively engaged in various activities related to animal husbandry sector as a keynote speaker at various fora, including participation in activities of FAO as an aquaculture expert, besides regular participation as subject expert in national and international conferences on dairy, poultry, fisheries, and related subjects. The National Academy of Veterinary India congratulates Sri Tarun Sridharji for his outstanding achievements and feels happy to confer on him honorary fellowship of the Academy. This flash is coming here, I can't read. केदार जी तो आया नहीं है. You'll take it and we have to film. Okay. The next honorary fellowship is being conferred on Sri Sunil Chhatrapal Kedarji. Sri Sunil Chhatrapal Kedarji was born in April 1961 and completed his BSc in Agriculture and post-graduation Business Administration. He was in Nagpur Jilla Parishad member from 1992 to 1995 and General Secretary Maharashtra Pradesh Youth Congress. He was elected as an MLA in 1995 from Senori constituency and as Minister of State for Energy Transport Maharashtra. He got elected as MLA in 2004, 2009 and 2014 and presented in 2019 from Saner district Nagpur as a member of the Indian Council of National Congress in Maharashtra Legislative Assembly. For 4 terms, he has served in various government committees, represented 4 various high-level delegations and worked with optimum potential to give justice to the common man. By virtue of his current position, the Senan goats from European countries. Further, he has also brought the semen of Damascus goats for crossbreeding with Usmanabadi goats to improve the meat production. These activities in future would provide a long-desired impetus to the goat rearing activities in Vidarbha region to improve the livelihood of farmers. The NAVS India congratulates Sri Sunil Chhatrapal Kedarji for his outstanding achievements and feels happy to confer on him the honorary fellowship of the Academy. Since Dr. Sunil Chhatrapal Kedarji is not able to visit, not able to come today, our Honorable Vice Chancellor will take the honorary fellowship on his behalf. The last one is Dr. Umesh Chandra Sharma, our ICA president. Unfortunately, he lost his mother and he couldn't attend. So our Vice Chancellor, Dr. Dakshankar, will
receive the fellowship on his behalf. A little problem. Dr. Ramesh Chandra Sharma was born on June 5th, 1971 and completed his BVSc and H from College of Veterinary Science and Husbandry, Mao, in 1997. Currently, he is working as Registrar of Madhya Pradesh Veterinary Council, Bhopal, besides being the President of Veterinary Council of India and President of the Indian Veterinary Association since 2019. Dr. Sharma has long experience in veterinary policy management through his engagement of various fora, including President of Veterinary Council of India, Member Indian Council of Agricultural Research, President Prantiya Raj Pasu Chikitsa Sangh Bhopal, Board Member of Nanaji Deshmukh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Jabalpur, and Technical Advisor Animal Husbandry, Ministry Government of Andhra Pradesh. Besides, Dr. Sharma has been involved in the social sector by working with various social organizations since 1991. The NAVS India congratulates Dr. Ramesh Chandra Sharma for his outstanding achievements and feels happy to confer on him the honorary fellowship of the Academy. Thank you so much. Now I'd like to request Major General Dr. M.L. Sharma sir, Secretary General, NAVS India, New Delhi. Honorable Chief Guest, Dr. Mohan Bhagwat ji, Honorable Guest of Honor, Shri Purushottam Rupala ji, distinguished dignitaries, my professional colleagues, ladies and gentlemen. I'll give a small, very brief about of National Academy of Medical Sciences to promote knowledge of veterinary sciences and its practical application to solve problems of national interest, and to encourage and recognize merit in all branches and disciplines of veterinary sciences, to secure coordination between the Veterinary Academy, other academies, other associations, organizations, agencies working for welfare of animal and production of animal products, and lastly, to secure and manage funds to meet the objectives of this academy. So this was in a nutshell a background about the academy. The academy is governed by 19 elected members, which are called governing council, and these governing council is elected every 3 years out of around 400 elite veterinarians who are fellows of the academy. In addition to these 19 members, we have the ex officio members who are the serving government employees, like we have Deputy DG from ICR, one of the ex officio member. Then we have got Animal Husbandry Commissioner, Government of India from Department of Animal Husbandry. Then we have the President, Veterinary Council of India. And lastly, the Director General, Remount and Veterinary Corps. So this is the constitution of the governing or functioning manpower who run this academy. The present governing council was elected on 2nd December 2020. And in past 1.5 years, because of the problem of COVID, we could not have really sufficient enough of this kind of physical meetings. So we could still organize 2 scientific conventions. One was on control of rabies in our country, which is considered to be
one of the very important zoonotic disease. And second was transforming livestock health and production with innovative technologies and policy reforms to boost farmers' income. This was organized during our last convention, which was online. That was in September last year. The Academy has to encourage people to go for more research activities and excel in their respective field of wherever they are. So, instituted certain awards in past 1 year. One is Dr. C.M. Singh Award for Excellence in Veterinary Science. It has a cash award of 51,000 rupees. Then our present President, Dr. D.V.R. Prakash Rao, he has instituted an award with cash award of 51,000. And the name of the award is Dr. D.V.R. Prakash Rao Lifetime Achievement Award cum late Srimati Sundari Prakash Rao Memorial Endowment Lecture in Animal Health and Production. And the third award is instituted by a lady veterinarian who happened to be a graduate from this college on honor and name of her late husband, Dr. Vallabh Mandakot Memorial Award for Outstanding Young Woman Veterinarian. And here we have a cash award of 41,000 rupees. Then the last one is the Young Scientist Award in Veterinary Sciences. That is from our academy side, again having a cash award of 31,000. So this is, all these awards have been instituted only during the present, Governing Council, that is last year. And it is basically to encourage people to do better in their respective field of veterinary profession. This year we have the fellowship awards, which are the awards of the Academy. We are giving awards to 20 fellows, 11 associate fellows, 24 members, and of course 5 honorary awards for honorary fellowship awards. Now, as far as fund position is concerned, already our president has mentioned that like other academies, National Academy of Medical Science or Agricultural Science, they are supported roughly to the tune of 1.5 to 2 crores every year. Whereas, unfortunately, this academy is not getting any funds from the government, which is a very sad affair. And during this past 1 year, our academy could bring memberships from some of the universities and corporate sectors and added about 40 lakhs to the corpus of the academy. With this addition, we have 1.5 crore as a corpus at present with the academy. And we seek help from other universities, other institutions, corporate sector to organize this kind of functions. Now coming to what we are up to now, what are in offing. We are working with Veterinary Council of India to formulate regulation for paravets in the country, and for working with the academy to, in light of the changing environment, this is what is for past 1 year's contribution from the present GC Academy. Thank you very much. Thank you so much, sir, for elaborating the activities and the annual report of NAVS. Moving on to another section, that is Convocation Ceremony of National Academy of Veterinary Sciences, India, New Delhi. Conferment of Fellowships and Awards. I'd like to request Dr. Varshni, sir, Vice President, NAVS, to conduct the felicitation of Padma Shri awardees and NAVS awards, please. Good morning. Param Shraddhe Mohan Bhagwat ji, Shri Rupala ji,
Cabinet Minister, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. National Academy of Veterinary Sciences honored and feels proud to inform you that during recent past, 3 eminent veterinarians conferred Padam Shri. Dr. K.K. Sharma in 2020, Dr. M.L. Madan 2022, Dr. Sosamma Aib 2022. Dr. Susamma could not reach today because her travel to United States, sir. But she sent her blessings to the August gathering. First, I will read the brief achievements of the Padam Shri awardees. And while I'm reading the achievements, very humbly I'll request the awardee to kindly rise at his place so that the audience can see the awardee. And thereafter, I request the awardee to kindly come over the dais to receive for the felicitation from the guests. First, I'll read out the brief achievement of Padam Shri Motilal Madan ji. We request to kindly rise at his own place. Motilal Madan ji, a well-known, renowned veterinarian and regenerative biotechnologist of the country, has been conferred Padam Shri Award this year 2022 in the category of Science and Engineering. Born in 1939, Dr. Madan is considered a pioneer in the field of animal reproductive biotechnology in India. Due to immense contributions in the animal science through animal biotechnics, Dr. Madan is considered the father of animal biotech revolution in India. He performed the first successful in vitro fertilization of a buffalo in the world, leading to the birth of a calf. He remained number of prestigious positions in the country, namely the Vice Chancellor of Veterinary University Mathura, Vice Chancellor Punjab Rao Deshmukh Agriculture University Akola, DDG ICR, and many more other prestigious positions. A long list of awards that there. Haryana Vigyan Ratan Award, Dr. B.P. Pal Award, Rafi Ahmed Kadri Award, Hariom Award, and many more long list of the awards. The National Academy of Veterinary Sciences India congratulates Dr. M.L. Madan and feels proud for his outstanding achievements and receiving the prestigious award of Padam Shri. May I request Dr. Madan sir, Padam Shri, to kindly come on the dais. Thank you very much, sir. Next, I'll read out the brief achievements of Dr. Kushal Kumar Sharma.
Dr. K.K. Sharma, an Assam veterinarian, has been conferred Padam Shri for his outstanding contribution in the field of wildlife treatment and Asian elephant conservation in the year 2020. Dr. Sharma is currently professor and head of the Department of Surgery and Radiology at Veterinary College, Khanapara, Guwahati. Dr. Sharma is widely recognized as the elephant man of Asia. During the last 3 decades, Dr. Sharma played an outstanding contribution in wildlife treatment across India and even abroad, despite of his teaching assignments. Dr. Sharma is a member of the steering committee Project Elephant of the Ministry of Environment and also member of IUCN Species Survival Commission on Asian Elephant Special Group. The National Academy of Veterinary Sciences India congratulate Dr. K.K. Sharma for his outstanding achievement and receiving the prestigious award of Padam Shri. Kindly come on the dais for felicitation. Now, coming to so let me complete this awards. Okay. So now coming to the National Academy of Veterinary Sciences awards. There are 4 awards. I will read out the citation of the respective awardees. While reading citation, I will request the awardee to kindly rise at his own place. And thereafter, the awardee, they can come on the dais to receive the award. After receiving the award, the awardees, they will speak about his achievements for about 3 minutes, that is 2 to 3 minutes, as per the guidelines of the awards. So first I'll come to the Dr. C.M. Singh Award for Excellence in Veterinary Sciences. For that, the award goes to Dr. K.M.L. Pathak. Professor K.M.L. Pathak did his BVSc and AH, MVSc and PhD from GB Pant Agriculture Technology University, Pantnagar, without outstanding academic credentials, and obtained postdoc in biotechnology from UK. He served as a Deputy Director General at ICR, Vice Chancellor Dovasu Mathura, Director ICAR NRC Kemal, and the Director of and Head of the Department at Rajuvas, Bikaner. He has immense research, administrative, financial, and managerial experience in frontier areas of agriculture, National Agriculture Research System. He has got 1 patent on camel pox vaccine and authored more than 132 publications and 7 books. He is a recipient of several awards and honors. Dr. Pathak has been president of this National Academy of Veterinary Sciences and Indian Association of Advancement of Veterinary Parasitology. He is a fellow of very prestigious associations also. This National Academy of Veterinary Sciences India congratulates Dr. K.M.L. Pathak for his outstanding achievements and feels
happy to confer on him the National Academy of the National Academy Dr. C.M. Singh Award for Excellence in Veterinary Sciences. So you kindly come, and may I request Shri Mohan Bhagwat ji to kindly get this award to Dr. Pathak, please. May I request Dr. Pathak to please speak about for 2 minutes about his achievements. Dr. Pathak, please. Could you speak? परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रेसिडेंट NAVS डॉक्टर DVR प्रकाश राव, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ मापसू डॉक्टर पातुरकर एंड छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय वेटरनरी कामधेनु विश्वविद्यालय डॉक्टर दक्षिणकर जी, जनरल सेक्रेटरी Dr. Tarun Sridhar ji, and Dr. Kurkure, the organizing secretary, Padam Shri, Dr. M.N. Madal ji and Dr. Sharma ji, Vice President, Deputy DG, Dr. Tripathi ji, Honorable other faculty members, Dean, Directors, Director from the ICR Institutes, guests and media persons. At the outset, I feel greatly humbled by this award and honor conferred on me by National Academy of Veterinary Sciences. Sir, when I walk back in my memory lane, I see myself working in various capacities, starting from assistant professor to associate at Pantnagar, then associate professor, director research at Rajasthan Agriculture University, Bikaner, director Camel Research Institute, deputy DG ICR, and finally Vice Chancellor at Pandit Deendayal Upadhyay Pasu Chikitsa Vishwavidyalaya, Mathura. Sir, I view my contribution I could make as a teacher, and I see that my all students are very successful today. My contribution has been spoken by the Dr. Vasane, the Vice President of the Academy, but I can say, sir, that these contributions, whatever I could do as throughout my career, are because of one single factor, and that I always had a support of excellent team and few individuals who were outstanding in merit and sincerity both. Sir, it is my firm conviction that the individual cannot do anything. The individual cannot do significant contribution. It is the teamwork. So today, while receiving this award, sir, I remember and recollect fondly my all associate team members, friends and well-wishers. और सर, आज मेरा सौभाग्य है कि आज परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी के हाथों से और परम पूज्य डॉक्टर रूपाला जी के हाथों से मुझे ये अवार्ड डॉक्टर CM सिंह अवार्ड मिला है. मैं आई एम थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट NAVS and whole NAVS GC and other members for this award. Thank you very much, sir. Thank you. So next award, that is the Dr. DVR Prakash Rao Lifetime Achievement Award. So next award is this Dr. DVR Prakash Rao Lifetime Achievement Award cum late Srimati Sundari Prakash Rao Memorial Endowment Lecture Award. For that, the award, the Academy selected the Dr. S.K. Ranjan. Dr. Ranjan, born on October 3rd, 1934
completed his BVSc and AH from Mathura Veterinary College, MVSc from Agra University, MS from University of Illinois, USA in 1962, and PhD Animal Nutrition from Agra University 1966. Dr. Ranjan remained professor of animal nutrition at Jawaharlal Nehru University Agriculture, the University Jabalpur, head of the Animal Nutrition Division, joint director and professor of emeritus at IVRI, Aizat Nagar. He has been a consultant with many international organizations like UNDP, FAO, Swiss Development Corporation, Danish International Development Agencies, ADB, and the World Bank. Dr. Ranjan has received many distinguished awards. The number of long list of awards I will not read out. Dr. Ranjan has published 250 research papers and 12 books also. Presently, he is working with the Indian Meat Export Industry and APIDA, Ministry of Commerce and Industry since 1994. So NAVS congratulates Dr. S.K. Ranjan for his outstanding achievements and feels happy to confer on him the Dr. DVR Prakash Rao Lifetime Achievement Award, cum late Srimati Sundari Prakash Rao Memorial Endowment Lecture Award. So kindly receive this award from Param Chidre Shri Mohan Bhavagji and Shri Rupalaji. So I request Dr. Ranjan sir to kindly sir, because of the paucity of the time, kindly because the chief guest has to leave at 1 o'clock. So kindly give 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. Honorable Dr. Mohan Bhagwat ji, Chief RSS, Honorable Minister of Animal Husbandry, Union Minister of Animal Husbandry, Government of India, Mr. Parshottam Rupala ji, Dr. Prakash Rao, President NAVS, Dr. Ashish Patrukar ji, Vice Chancellor, and distinguished delegates and members sitting in the hall. First of all, I'd like to thank Dr. Prakash Rao for instituting a Dr. Prakash Rao Lifetime Achievement Award, late Shrimati Sundari Prakash Rao Memorial Endowment Lecture under the NAVS. I am humbled and privileged and honored to receive the first award. This academy was established in 1993 and it was formally inaugurated in 1996 by the then Union Minister of Animal Husbandry, Government of India with the independent charge. After 11 years of its existence, the first election were held in 2004, in which I was elected as the president of the NAVS. When I took over as a president, there were 2 major problems which were facing the academy. Number 1 was its permanent location and second was its regular government funding. I am glad that both these have been now solved by the present president, Dr. Prakash Rao. My compliments to him. When I took over as a president of NAVS, there were one more problem which we focused and it was approved in the Governing Council, that was
the creation of ICVR on the basis of the ICMR. Then resolution was passed in the first Governing Council, and then I was asked to meet the then the Union Minister, Mr. Sharad Pawarji. I met him at his residence as well as at his office, and he was fully convinced for creation of the ICVR. He referred that matter to the Director General at that time. He vehemently refused it. He said this is a part of the ICAR. Anyway, my humble request to Dr. Mohan Bhagwatji and the Honorable Minister, Union Minister Rupalaji is to look into it and create the Indian Council of Fisheries and Veterinary Research or Veterinary and Fishery Research, which is very much required, which I'll speak in another 1 minute. I have an association with the veterinary profession for 66 years. Out of this 66 years, 36 years I have spent in research, teaching research, and during this 36 years, I have been at various places like lecturer at Mathura Veterinary College, professor at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, head of the division animal nutrition at IVRI, then chief technical advisor at the Philippine chief technical advisor FAO UNDP, a Philippine Carabao Research and Development Center in the Philippines, and the visiting professor at the University of Philippines at Las Baños. I had a start stint of 2.5 years at the World Bank. During these 36 years with the teaching, research and extension, I had the opportunity to be involved in saving millions of animals by transferring the technologies which were generated at IVRI. There was a severe drought in 1972 in Maharashtra. At that time, the cattle relief camps were opened near the sugar factories under the supervision of UN Debar. Then half of the animal nutrition staff from IVRI was diverted to Maharashtra, and we taught them how to feed the bagasse, which was used as a fuel, and fortify it 1% urea and 10% molasses. For 1 year we fed, and all the animals, we were able to save them. Similar situation was arised in Indonesia in 1976. In Indonesia, there was a drought. So we transferred the technology of urea molasses mineral block, and with paddy straw it was fed, and the millions of animals saved in Indonesia. Then in 1994, I was asked by FAO to go to Philippines. Again, I was working in the World Bank to transfer. There was a Mount Pinatubo eruption, and there was a drought, and then we fed the animals with the urea molasses mineral block, and this publication was brought out at that time by the UNDP. During this, when I was at Philippines, we crossed the Philippine Carabaos, which are draft animals, with the Murrah buffalo semen, which I took from CIRB, Hisar, and crossbreds were produced. And thus crossbreds, in 1982, first crossbred was born. In 24 years, now there are 250,000 crossbreds in the Philippines, and they are producing more milk, that 4 to 5 liters of milk per day. And then I was awarded as a Trangla Award by the Minister of Science and Technology in the Philippines. Thereafter, after I came back to India and then settled and worked with the meat industry. Meat industry at that time was exporting meat. Indian buffalo meat was exported at about 4,000 crores. Then we brought out the Red Indian Meat Industry Red Manual, which had the safety aspect, how the meat safety management system, integrated plants were created, and then the export now stands to 27,000 crores. Then these manuals are repeated, every year, these are reproduced, every 2 years, the 4th edition is there. The last one which we are now concentrating on is the export of pork meat. Pork meat, this was also released on 25th of March. There was APIDA had organized a meeting on the national business meat on promoting exports of value-added meat products. These was also released by our Honorable Minister of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying on 25th of March. So now we are focusing on export of value-added meat products. And finally, I am very much follower of Dr. Mohan Bhagwatji, because when I was 12 years old in 1945, my father took me to Peshawar in Sanatan Dharm School to join the RSS. I joined the RSS and I became a Ghatnaik, and I still remember one word, national song,
हिंदू भूमि का कण कण हो तब शक्ति का अवतार उठे, जल थल अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार हुए. Thank you very much and God bless you all. Sorry, I was not given much time. All right, sir. Thank you very much, Dr. Ranjan, sir. Next Academy Award is Dr. Vallabh Mandakot Memorial Award for Outstanding Young Woman Field Veterinarian. And incidentally, Madam Mandakot is also here. So thank you very much, ma'am. You kindly. This award goes to the Academy selected Dr. Aditi Sharma. Yes. Dr. Aditi Sharma completed her BVSc and MVSc in veterinary surgery and radiology from GB Pant Agricultural Technology University, Pantnagar. She also did a PG Diploma in Advanced Wildlife Management from Wildlife Institute of India, Dehradun. She is a member of 19 national and international academies under this association courses. She is the lead author for guidelines on occupational health and safety in context of HWC mitigation. National Academy of Veterinary Sciences, India congratulates Dr. Aditi Sharma for her outstanding achievements and feels happy to confer on him the Dr. Vallabh Mandakot Memorial Award for Outstanding Young Veterinarian Field Veterinarian Award. So I'll request the... Yes, Madam is here, if she can come here. She is the sponsor of this award also. And she is the first... just to inform you that she is the first veterinarian of this particular veterinary college. She is alumnus of this veterinary college. Thank you, Dr. Aditi, and thank you Dr. Bhagwati. So I'll skip because of the paucity of the time your speech because I have already read your achievements and all that. Thank you very much, Dr. Aditi. And thank you very much. And to Dr. Sachin Kumar. Dr. Sachin Kumar, please. Dr. Sachin Kumar was born in Shamli district of Uttar Pradesh. He graduated from College of Veterinary and Animal Sciences, Parbhani, and he received his MVSc and PhD in Animal Nutrition from IVRI Aizatnagar and joined ARS in 2015. Dr. Kumar is presently serving as a scientist at the Division of Animal Nutrition, ICR, National Dairy Research, NDRI, Karnal. He has handled 22 research projects as a PI as well as a co-PI, funded by Bill and Melinda Gates Foundation, DBT, 45 research papers. And Dr. Kumar has many awards in his name, I'll not read out. And the NAVS India congratulates Dr. Sachin Palaji and Mohan Bhagwati. So I'll skip your speech also. Yes, please. Please. Thank you very much. Dr.
Ajad Kaushik was convinced by General Shrikant Sharma, who was a former president of the academy, to donate 10 lakhs instituting the award and late his father's name, who was a professor of extension in Hisar. I would request Dr. Ajad to come to the stage. Just speak 2 minutes, please. We are running short of time. Namaste. Marniya Dr. Mohan Bhagwat ji. Greetings from Ontario, HSS, Canada. Honorable Minister Sri Rupala ji, Dr. Prakash Rao, the dignitaries at the stage and the august members of this academy. I am very grateful to the academy for constituting the award in the name of my father, Dr. R.K. Sharma, who spent all his life for the profession. Major General Shrikant Sharma actually reconnected me with India and the academy. And he encouraged me, and I know that my own professor, Mandokot, she put an award, and this encouraged me quite a bit, that we should institute an award in the name of my father. But why should we put this award in the name of my father? Well, I remember my childhood. My father, he was working as a field veterinarian. We lived in very remote villages. There was no electricity. There were no means of communication or transportation during those days. So I grew up in that kind of environment. And then he worked for about veterinarian. And all of a sudden, I realized that I don't seem to know my father at all, because he decided to move to academia. So he left the field veterinarian's job after 10 years, and he moved to the university. And there's a phrase in English that if there were no mutations, we would still be faced as a veterinarian in the field was, there was no education. The technology remained at the universities. There was no bridge, there was no connect with the society or people or farmers at all. And I should mention that Dr. Jagdish Chandra Sharma, he had come from Cornell University at that time. My father and him, they synthesized the concept of Krishi Gyan Kendra in Haryana. That was first time done in Haryana, actually, at that time, to impart knowledge and training to farmers. And not only farmers, even the veterinarians, they needed some continuing education during those times. And that's how this whole concept of Krishi Gyan Kendra that initially started in Haryana evolved at the national level as Krishi Vigyan Kendra that I believe exists at this time. And this I have realized even more, being in the western part of the world. We live in ivory towers at the universities, and there's a kind of disconnect. Unless this knowledge goes to the farmers, veterinarians, or they improve the quality of life of people, this knowledge it remains confined to the university system. So it is for those reasons, in a philosophical sense, and I must mention that Dr. Rao, that we must support merit in these kind of awards, because without merit, no society, no nation can ever move forward. And for this reason, I'm very thankful on behalf of Kaushik family and on my own behalf that the memory of my father, who fought for the profession all his life, especially veterinary extension, the kind of things that I've heard today, I've heard 40 years back the same story. And as a student, I was influenced when I was doing my master's. I even wrote a letter that was published in Hindustan Times in 1978. Animal husbandry neglected. And I hear the same kind of things. We still don't have Indian Council of Veterinary Research. We have made some headway. We have moved forward, but we have not made a headway to lead the world. I'm very grateful to you for instituting this award in the memory of my father, Dr. R.K. Sharma, Award for Excellence in Veterinary Extension. Dhanyawad. Thank you so much, sir, for the very kind move. Next, I'd like to call upon
Secretary Sharma sir. Now we are having award ceremony for the fellowships awarded by the Academy for this year. I am not going to, because of constraint of time, read out the entire citation. I will be just naming the recipient, and I request them to come one by one to receive the award from the President. First is the fellowships. Dr. Narendra Nath Burman. He is from the Assam Veterinary University, Khanapara. I request President to admit him as a fellow of the Academy. On the authority admitted to me by I. Next name is Dr. Bhattacharya, T.K. Bhattacharya. Dr. T.K. Bhattacharya, is he there? Dr. T.K. Bhattacharya has not come? Okay. Next is Dr. A. Nagalakshmi from Hyderabad. She's coming. Dr. Dr. Pramod Bora. R1. Okay. Dr. Ramanuj Banerjee. Dr. Ramanuj Banerjee is from Ministry of Science and Technology. Dr. Narendra Singh Khan. Dr. Sel Raju. Associate Fellows. So, Dr. Anil Kumar Gangwar. We have the members. We have accepted Dr. Jayaprakash Gupta as a member of the Academy. Then is Dr. Y.S. Jadon. Dr. Y.S. Jadon. Dr. Sachin Kumar. Dr. Dhruv Prasad Bora. Now you can. Here. Dr. Ajit Kumar. Dr. Lipi Sumita Samu.
for your fellowships. When you return back to your place, you will have to toil to change your nameplates. FNAVSI will be the new addition to your nameplates and your biodata. Now we will have address of Dr. N.P. Dakshinkar, Vice Chancellor of Dow Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya, Durg, representing Veterinary Council of India, New Delhi. Sir, please. आज के इस पावन समारोह में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि आदरणीय पुरुषोत्तम जी रूपाला, केंद्रीय मंत्री पशुपालन, मत्स्यपालन और दुग्धोत्पादन, डॉक्टर प्रकाश राव, प्रेसिडेंट NAVS, डॉक्टर शर्मा, सेक्रेटरी जनरल NAVS, डॉक्टर पातुरकर, वाइस चांसलर महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी, मिस्टर तरुण श्रीधर, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ADF, डॉक्टर कुरकुरे, डायरेक्टर रिसर्च, और हमारे सामने पहले रो में बैठे सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आए हुए इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर A.T. शेरीकर, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर मदान, DDG डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर KML पाठक, डॉक्टर वार्ष्णे, ADG डॉक्टर अशोक कुमार, मापसू के फैकल्टी बोर्ड मेंबर्स और इस कार्यक्रम के लिए पधारे ICR इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स, डीन्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द वेरियस वेटनरी यूनिवर्सिटीज, देवी और सज्जनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपने विषय रखे हैं, इसलिए मेरा वक्तव्य बहुत आसान हो गया है। मुझे जो कहना है पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से वो विषय रखा है, पर फिर भी हम देखते हैं कि वैदिक काल से ही पशु विज्ञान शास्त्र जो है वो प्रस्थापित था। अथर्ववेदा और ऋग्वेदा में इस बारे में उल्लेख है, और उल्लेख के अनुसार हम देखते हैं कि पशुवैद्यक शास्त्र यह बहुत उन दिनों प्रगल्भ भी था। Scientific development of the veterinary profession, it started late in the 18th century with the establishment of Punjab Veterinary School at Lahore in the year 1882. उसके बाद में बम्बई का कॉलेज प्रस्थापित किया गया, उसके बाद में कलकत्ता, मद्रास और 1930 में पटना। जब देश को स्वतंत्रता मिली तब हमारे पास में 6 वेटरनरी कॉलेजेस थे, परंतु आज हम देखते हैं कि वेटरनरी प्रोफेशन इतना डाइवर्सिफाई हो गया है और इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास में 60 वेटरनरी कॉलेज पूरे देश भर में हैं और 15 वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंतर्गत ये वेटरनरी कॉलेजेस आते हैं। परंतु आज भी हम देखते हैं कि आउट ऑफ दिस 60 वेटरनरी कॉलेजेस, 24 वेटरनरी कॉलेजेस आर स्टिल अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। 1960 में मिस्टर राल्फ करके जो थे रॉकफेलर फाउंडेशन के डायरेक्टर, उन्होंने ये सुझाव सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कि भारत में डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की जाए, और उसके अंतर्गत 1960 में 1960 में पहली वेटनरी अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना पंतनगर में की गई, और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हर स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उन दिनों एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस ये जो था, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, एक में के ऊपर में डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंसी थी निश्चित रूप से।
क्योंकि टिल 1960s हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक या बुलक पावर का उपयोग विशेष रूप से टीलेज के लिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था, परंतु विद द मैकेनाइजेशन अभी आज हम देखते हैं कि लाइव स्टॉक का उपयोग एग्रीकल्चर में अब करीब करीब निग्लिजिबल हो गया है, और एज सच interdependencies on agriculture and livestock, in between livestock and agriculture, is practically vanishing. ये खत्म होते जा रहा है. हम देख रहे हैं, जब ये हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात का जिक्र किया कि विद इन एग्रीकल्चर जीडीपी लाइवस्टॉक इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 33%. परंतु ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बजट एलोकेशन फॉर द वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, दैट इज नॉट हैपनिंग, एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द foremost रीजन व्हाई द veterinary institutes are lacking in the infrastructure. With the requirement of the time, 1984 में वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज टू रेगुलेट द वेटरनरी प्रैक्टिस इन द कंट्री. दूसरा, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एम्पावरमेंट किया गया वो ये कि एट डिग्री लेवल veterinary education within the country will be regulated, or rather is regulated by Veterinary Council of India. और मुझे खुशी है कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बारे में बहुत अच्छी पहल करके अक्रॉस द कंट्री, संपूर्ण देश में एक यूनिफॉर्म सिलेबस अंडर ग्रेजुएट पे लेवल पे लाने का महत् प्रयास करके 93 में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन हमने लाया. उसका मॉडिफिकेशन 2008 में किया गया, और अभी एग्जिस्टिंग 2016 का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन इन द कंट्री है. परंतु वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसके पास में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, और in order to match the standards of the veterinary education within the country, जो भी नॉर्म्स वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिफाइन किए गए हैं, आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द वेटरनरी कॉलेजेस इन द कंट्री दे आर नॉट मैचिंग विद द स्टैंडर्ड्स प्रपोज्ड बाय वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इन व्यू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ द टेक्निकल मैन पावर एंड सो ऑन. और इसका मूल रीज़न यह है कि मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि अभी interdependencies on the agriculture is practically vanishing, whereas at the same time there is diversification of the veterinary profession in the country. हम देखते हैं कि at the time of independence veterinary profession ये एक मोनो एक्टिविटी थी, और उन दिनों वेटरनरियन का मुख्य प्रमुख कार्य जो रहता था वो तो एनिमल ट्रीटमेंट, और दूसरा तो रिंडर पेस्ट का इरेडिकेशन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि जीडीपी में इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं कि डेयरी में 6.5% की ग्रोथ रेट है, पोल्ट्री में 8% की ग्रोथ रेट है, मीट में 6% की ग्रोथ रेट है. इन स्पाइट ऑफ दैट द फंड दैट शुड फ्लो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन इज नॉट बीइंग गिवन, whatever may be the reasons. परंतु एक बात निर्विवाद है कि आने वाले दिनों में वेटरनरी प्रोफेशन और लाइफ स्टॉक सेक्टर इज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी, एंड इफ वी वांट टू अचीव द गोल, डेफिनेटली देयर शुड बी फ्लो ऑफ द फंड्स. एज ऑफ नाउ वी आर अंडर द Indian Council of Agricultural Research. We are getting aid from the Indian Council of Agricultural Research. Monitoring is also done by the Indian Council of Agricultural Research.
and the integration of various universities is also being done by the Indian Council of Agricultural Research. Unless and until, as rightly proposed by the earlier speakers, that Indian Council of Veterinary Research is not established, you will find that this profession, this livestock sector will not grow as is envisaged. मेरा मंच से यही अनुरोध रहेगा कि इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचकर इस विषय को आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता है। दूसरा विषय हमने जो देखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑलरेडी इन प्लेस। 2020 से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें जो अपेक्षित है कि जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ करके हमें ट्रांसफॉर्म करना है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। बट जब वेटरनरी कॉलेजेस की स्थापना की गई और कोर्स करिकुला इस बारे में जो भी तत्कालीन से आज तक के जो भी कोर्स करिकुला जो डेवलप किए गए हैं, आई फील दे आर बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल and getting strength from the human medicine. And as such, आप कोर्स ड्यूरेशन देख लीजिए। The amount of the study a veterinary student at the undergraduate level he undergoes, it is at par with the medical. So definitely there is a parallelism between the medical science and the veterinary science. परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल साइंस और फैकल्टी ऑफ लॉ इन दोनों को मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज से अलग किया गया है। बट एज वी आर गवर्न्ड बाय द ICR सिस्टम, द वेटरनरी साइंस इज इंक्लूडेड इन द मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। मैं अर्ज आज मंच से यही रहेगी कि इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार करने की निश्चित ज़रूरत है कि वेटरनरी प्रोफेशन, वेटरनरी साइंस को भी एट पार मेडिकल साइंस हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और इफ एट ऑल the income of the farmer is to be doubled, we have to give definitely due attention towards the livestock sector in particular। और विशेष रूप से दो चीज़ों का अगर हम कार्यान्वयन या योजना बनाकर वो प्रस्तापित करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी फिशरी रिसर्च और वेटरनरी साइंस एजुकेशन, ये अगर हम मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम से बाहर करके एट पार विद द ह्यूमन मेडिसिन, मेडिकल साइंस के बराबर करते हैं तो निश्चित रूप से शासन का जो लक्ष्य है वो हम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आयोजकों ने मुझे यहाँ मेरे विचार व्यक्त करने की जो अनुमति दी उसके लिए मैं सभी का आभार हूँ, ऑर्गेनाइजर्स का। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वाणी को भी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। इसके बाद में 4 लोग हैं जो एसोसिएट फेलोशिप 1 एंड सम 4 फेलोज फॉर मेंबरशिप जो रह गए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शर्मा सर टू डू दैट। थैंक यू। डॉक्टर R. तिरुपति, डॉक्टर जगदीप जसवंत, डॉक्टर हरप्रीत सिंह, डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, डॉक्टर मरिंगंग नपक from Ludhiana।
We have the honor to have amongst us our guest of honor for today's function, Honorable Shri Purushottam Rupalaji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. I heartily invite Shri Rupalaji for his address. नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। आज के इस कार्यक्रम को दिव्यता बख्शने हेतु हमारे बीच में मौजूद परम श्रद्धेय आदरणीय मोहन भागवत जी, मुझे इस बात का गौरव है कि जहां मोहन भागवत जी ने अध्ययन किया है उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में इस कार्यक्रम को मंच से बैठने का मौका मिला और इसी के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद भी करता हूं। और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मंच के सामने बैठे हुए और भी सभी महानुभाव ही हैं ऐसा मुझे लग रहा है, और बड़े वरिष्ठ और प्रतिभा संपन्न लोग, पद्मश्री से नवाजे गए लोग, ऐसे अवार्ड देने के काबिल लोग सामने बैठे हैं। पत्रकार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं NAVS के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सका। 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई। एक तो जो मुझे मंत्री के नाते सुनना चाहिए, ये कभी भी मेरी ऑफिस में या मेरे निवास पे या किसी फोरम पे इतनी सटीकता से मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे सुनाने के लिए तो चिन्हित किया, मगर उसके साक्ष्य के लिए बहुत ही शक्तिशाली लोगों को रख दिए। सो अब इस विषय में मुझे बहुत कुछ कहने सुनने का वो नहीं है। मैं 1-2 चीज़ें ही मेरी ओर से बताना चाहता हूँ, वो इतनी ही। यहाँ सबसे ज़्यादा तालियां बजती हैं ICAR से ICVR होने की बात आती है उस और दूसरी जो 2-3 चीज़ें थी वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन और उसी पे गौर देने का, उस पर फोकस होने का, इन दोनों चीज़ों पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कह रहे हैं कि जैसे कि ये क्षेत्र ऐसा है जिस पर फोकस होने की आवश्यकता है, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं, इसका भी मुझे गर्व है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने ही इसको फिशरीज का स्वतंत्र विभाग भी बनाया, उन्होंने ही ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को भी स्वतंत्र विभाग भी बनाया, मंत्रालय भी बना दिया, बजट एलोकेशन भी कर दिया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन से पहले ये मवेशियों की वैक्सीन का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। ये कोरोना की बहुत चर्चा होती है क्योंकि हमारा है ना, आदमियों का है, ये मवेशियों का है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। सो मैं तो सिर्फ इतना ही इंगित करना चाहूँगा इस मंच से कि हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस इसी एरिया पे हो ही गया है। अब जब विभाग ही बन गया है तो ये बनने में बहुत देर लगने वाली नहीं है, मगर हमें इसको इस प्रकार से बनना चाहिए कि एक परिवार में से जो जिस प्रकार से हमारा डिवीज़न होता है उसी प्रकार से इसका डिवीज़न हो जाए, और ऐसे ही सरलता से इस विभाग की पुष्टि के लिए, अब विभाग ही बन गया है तो विभाग की ही ज़रूरत है कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और उसमें हमारे पूर्व सचिव महोदय ने कुछ जो क्रोनोलॉजी बताई है वो भी मेरे संज्ञान में लाए, वो भी बहुत ही एक अच्छी मेरे लिए जानकारी होगी, जाकि मैं इनका फिर कॉग्निजेंस लेकर इन चीज़ों को थोड़ी गति देने का प्रयास करूँगा। अभी
यहाँ से कुछ बातें फंड्स के लिए होती है, मैं इसका आवकार करता हूँ, मगर मैं अनुरोध करता हूँ कि इन चीज़ों को इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका कोई ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ अत्यंत आवश्यक है, मगर ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। दूसरा, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कंपटीशन में है ही नहीं, सो उस प्रकार से हमें बातें करने की आवश्यकता नहीं है। हम कह रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा फंड मिल रहा है, इस सेक्टर को कम फंड मिल रहा है। फिर दूसरी बात तुरंत सामने आ जाती है कि उसको कम फंड से हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और वो ज़्यादा फंड से ग्रोथ रेट कम है, तो फंड वो काम की चीज़ नहीं है, वो सामने आ जाता है। इसलिए ऐसे लॉजिक हमें प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जिन लॉजिक की आवश्यकता ना हो। इसके ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स आवश्यक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, उसी पर हमें बल देने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं भागवत जी हैं इसलिए मेरे पास समय की कमी होने के बावजूद भी, मैं परसों गुजरात के ईडर नगर में था। वहाँ एक बाल गोपाल बैंक का जिक्र हुआ, और बाल गोपाल बैंक के उन्होंने जब मुझे विचार बताया था 1-2 साल पहले, तब से मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा। उन्होंने ये प्रैक्टिस किया है भागवत जी कि वहाँ बच्चों की वो बैंक बनाई है उन्होंने, सिर्फ बच्चे ही उनके मेंबर्स हैं, और बच्चों को वो बचत बैंक, वो बॉक्स देते हैं ना गल्ले पैसा डालने के, वो प्रोवाइड करते हैं। और हर महीने उनके कर्मचारी उनके घर से उनके पिता के सामने वो गल्ले को खोलते हैं और इनको रिसिप्ट बना के दे देते हैं कि बच्चे के गल्ले से इतना निकला, और वो फिर इनके अकाउंट में जमा होता है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2-3 बच्चियों ने मंच पे आकर कहा कि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपये है, और इस बच्चों की बैंक का 16,000 सदस्य है। वो 18 की उम्र होते ही उनको छोड़ देते हैं, फिर इनको सदस्य नहीं रहने देते हैं, 18 उम्र की तक के रहते हैं, और उनके वाली उसकी संस्था के ऑफिशियल मेंबर बनते हैं, और कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड संस्था है बाल गोपाल बैंक, और कोऑपरेटिव फॉर्म में चल रही है। आज इस बैंक के पास 16 करोड़ रुपये हैं बच्चों की बैंक के। ये उदाहरण मैंने, आप सभी ऐसे महानुभाव हैं कि जो शोध भी कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, नेतृत्व भी कर सकते हैं, ऐसे सभी लोग हैं। सो ये पैसों की पूर्ति उन्होंने कैसे कर ली, इसमें कहीं भी सरकार नहीं है। आज अश्विन भाई पटेल नाम के चेयरमैन हैं ईडर के, बाल गोपाल बैंक है, उनके पास 16 करोड़ रुपये हैं, और उन्हीं बच्चों को आगे पढ़ना है तो वही लोन देते हैं उनको। ये एक सॉल्यूशन है। सो अभी इसी बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अलग कर दिया है। इसके पीछे मंशा यही है, ये सेक्टर ऐसा है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बलबूते पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम वेटरनियन के बलबूते पर, आपने जैसे आप एकेडमिक संस्था चला रहे हैं, हमारा वो वीएमसी चल रहा है, आपके पास इतनी जनसंख्या है, उनका भी एक ऐसा तो संगठन होना चाहिए, उसमें सिर्फ 10 रुपया फी रखे, मगर ये परमानेंट एक आय का साधन इसमें टपकना चाहिए। ऐसा एक अपना फंड इसी संस्था के माध्यम से खड़ा करने का मैं अनुरोध करता हूं, जिसमें टोकन मनी मगर नियमित रूप से वो बचत बैंक में गिरता रहे, और ये अपने एक संस्था का फंड बनता रहे, ऐसा कार्यक्रम अपने साथ में जोड़ने का मैं नम्र अनुरोध करता हूं। भारत सरकार के मंत्री के नाते आप सब जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी लास्ट में जो प्रवक्ता हमारे बोले कि पहले हम शायद दक्षिणी साहब बोल रहे थे कि अब खेत में बेल की आवश्यकता नहीं रही, वो टेक्नोलॉजी आ गया, बदल गया। मगर अभी हमारे जगत गुरु जी ने परिक्रमा की पूरी दुनिया की, सेव द सॉइल। सेव द सॉइल क्या है? ऑर्गेनिक, अपना कार्बन घट गया है,
और कार्बन घट गया, वो सवाल तो खड़ा हो गया, जवाब किसके पास है? जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब अपने वेटरनरी विभाग के पास है, हमारी इंडिजिनस काव के उसमें इनका जवाब छिपा हुआ है, वो अकेला ही जवाब है। सो फिर से हम वहीं आएंगे, फिर से जमीन के कार्बन को सुधारने के लिए फिर गाय की ही जरूरत है। गाय के गोबर में ही ये क्षमता है और किसी में ये क्षमता नहीं। सो फिर से हमको वहीं आना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती की बात चल पड़ी है, प्राकृतिक खेती होगी कैसे? बिना गाय के हो ही नहीं सकती, तो हम फिर से वहीं ही आ जाएंगे। सो फिर से गाय का और हमारे पशुधन का ये समय आने वाला है। मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि पूर्व में जो था इससे भी अच्छा समय आने वाले दिनों में पशुपालन विभाग का और पशुओं का हमारी इकोनॉमी में, हमारे ग्रोथ में, हमारे समाज जीवन में आने वाला है। और हमारे पुरखों तो हमको बताते थे, गोधन गजधन बाजीधन, जो धन की हमारी गणना होती थी वो गोधन से होती थी। ये हमारी मान्यता थी। मैं ब्राजील जाके आया, वहाँ की इकोनॉमी गोधन पे ही आधारित है, और मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है, वो गोधन भी हमारा गोधन है, उसी पर उनकी इकोनॉमी ताकत से चल रही है। हमारे पास इन सारी विद्याओं की उपस्थिति है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सारी विद्या के मालिक इधर ही है, अभी ही इधर है, मौजूद है। हमको इनको आम जनता के लिए कैसे सरल से ट्रांसफॉर्म करे, इतना ही काम बाकी है। वो काम कैसे रुका है? मैं तो मानता हूं कि आपके टेक्निकल सेशन का एक विषय ये बनाओ कि आपके पास वो साहब हमारे जो जिन्हों को पद्मश्री की अपने उपाधि दिया सरकार ने, उन्होंने भैंस में वो कर दिया अपना IVF। अब वो इसका मतलब ये हुआ कि हम IVF कर सकते हैं, हमारे पास ये विद्या है, मगर ये हमारे पशुपालकों के पास नहीं है। क्यों नहीं जा रही है? इसमें क्या कमी है? उसको प्रोफेशनली हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके नॉलेज के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ने की क्या विधि हो सकती है? ये भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके टेक्निकल सेशन का वो भी एक विषय है। आपके पास विद्या है, आप फंड की कमी महसूस कर रहे हो। आप दुनिया में कहीं पे भी घूम के आओ, वहाँ ये सारा प्राइवेट प्लेसमेंट में ही हो रहा है, वहाँ कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। और हमारे पास भी धनवान नहीं है ऐसा थोड़ा ही है। उन धनवानों को पता नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करने से क्या हो सकता है, उनको बताने की आवश्यकता है और उनका रास्ता बनाने की आवश्यकता है। उस रास्ते को बनाने में भारत सरकार की जो भी भूमिका होगी वो आप हमें बताइए, वो करने के लिए मैं आप सबके सामने खुले मन से हामी भरता हूँ। हम करेंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे, जो भी होगा वो करने की हम कोशिश करेंगे। आज एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य रहा, सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना उतना ही इस दुनिया में, मैं देश में नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में डेडिकेशन के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए कमिटेड होने का सर्टिफिकेट है, सिर्फ स्वयंसेवक होना। हमारे बीच में स्वयंसेवकों के मुखिया जी विराजमान है, ये हमारी डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसके नेतृत्व में राष्ट्र की राजनीति दिशा निर्देश पा रही है। राष्ट्र की राजनीति की दिशा पाने से विश्व की राजनीति प्रभावित हो रही है। आप देखिए, परसों योग दिन, कल है योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, आज पूरी दुनिया योग दिवस मनाने के लिए तैयार है। आपके गुजरात देश के आयुर्वेद को विश्व ने मान्यता दे दिया। मैं परसों शोभित यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश मेरठ में गया था, वहां एक लड़की ने रुद्राक्ष पे PhD किया, रुद्राक्ष पे PhD हुई। अभी ये सारे संकेत किस ओर जा रहे हैं? और इस गाय और गाय के गोमूत्र और गोबर से, कल मुझे एक सज्जन मिले यहाँ, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मानसिंह, हाँ, इधर बैठे भी थे। उन्होंने मुझे बताया है
कि सिर्फ गोबर और गोमूत्र से ही गाय स्वावलंबी है, दूध तो मुनाफा है, इसका उनके पास मॉडल है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। कई चीज़ों के रिसर्च में अभी भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नेचुरल डेथ के बाद भी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और उसके शरीर का क्या करना है उसके बारे में भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उसमें से कई चीज़ें बन सकती हैं, इसका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद बन सकता है। इन सारी चीज़ों में समाधि खाद, हमारे शंकर जी हमको एक सभा में मिले थे, उन्होंने जिक्र किया था। इन सारी चीज़ों को समेट कर उसको प्रमाणित करने के बारे में भी इस संस्था को अपने टेक्निकल सेशन में बातें करनी चाहिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे बहुमूल्य कार्यक्रम का साक्षी बनने का मुझे मौका दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेरणादायक विचारों के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद सर। Now we have the chief guest and one of the most illustrious alumni of this college, Honorable Dr. Mohan Bhagwat ji, Sir Sanchaalak Rashtriya Swayamsevak Sangh, Nagpur. I call upon Dr. Bhagwat ji to deliver the convocation address and enlighten us with your words, sir. Please, sir. आज के कार्यक्रम के सम्मान्य अतिथि मंत्री महोदय आदरणीय रूपाला जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान पातुरकर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर कुरकुरे, डॉक्टर प्रकाश राव शर्मा जी, दक्षिणकर जी, मेरे गुरुजन भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं और गुरुतुल्य सभी लोग बैठे हैं। एक पशु वैद्य की हिसाब से लगभग आधा सभागृह ये मेरा सीनियर है। तो ऐसे सभी और अन्य उपस्थित सभी बंधु भगिनी, पहले तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जब जब यहाँ पर आता हूँ, ग्रेजुएशन के 4 साल तो इसी में निकाले, और पूरे जीवन के लिए सामग्री मुझे यहाँ से मिली है। बाद में बहुत वर्षों के बाद एक बार एलमनी गैदरिंग के लिए आया, तो वर्षों से जो नहीं मिले थे ऐसे मित्र फिर एक बार मिले और वो मिलना चलता रहा। तीसरी बार आया तो जो मैंने छोड़ दिया था, MVSC की डिग्री लेना ही बाकी था, बाकी सब हो गया था, लेकिन वो मैंने प्रोसीजर बेस का छोड़ दिया, इमरजेंसी लग गई तो वो डिग्री मेरी अधूरी रही थी। तो मुझे एक ऑनररी सम्मान आपकी ओर से दिया गया, केवल अपनत्व की भावना, और दूसरा कोई उसका कारण है नहीं। और आज आया तो आपने मुझे फेलो बना लिया औपचारिक रूप से। वैसे तो आई एम योर फेलो, सबका, सभी वेटरनरियंस का, क्योंकि मैं स्वयं वेटरनरी हूँ। तो ये जो सदैव स्नेह आत्मीयता आप लोगों से मिलती है, उसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ, और इससे मैं उऋण हो नहीं सकता। ये कर्जा ऐसा ही कायम रहे, उसमें भी बहुत अच्छा एक आनंद मिलता है। रही विषय की बात, तो बहुत सारी बातें यहाँ कही गई है। भाषण मेरा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं सोचकर आया था, वो सब यहाँ हो गया है, इसलिए मैं उसको एक सूत्र के रूप में आपके सामने रख देता हूँ। कृषि और पशुपालन, ये हमारे देश में नई बात नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे देश में कई नई बातें लाई, लेकिन उसमें ये नहीं है। हमारे देश में कम से कम 8000 वर्ष पुरातन कृषि है, और हमारी कृषि हमेशा पशुओं पर निर्भर रही है। तो हमारी कृषियों में अनेक क्रॉप्स और साथ में अनेक विध पशुपालन, ये सदा रहा ही है। ये बात ठीक है
कि 8000 साल से कोई कृषि विद्यापीठ हमारे यहाँ नहीं थे, हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, लेकिन हमारे खेत और हमारी पशुशालाएं ही हमारी लैबोरेटरीज थी और हमारे कृषक पशुपालक यही हमारे साइंटिस्ट थे। यानी विदेशों में नस्ल सुधार के लिए 300-350 साल पूर्व हमारे यहाँ से रेड सिंधी गायों को उधर ले जाया गया। जो आईसीआर के द्वारा पब्लिक टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें फर्स्ट ईयर में मैंने ये पढ़ा है, पूछा जाए तो उत्तर लिख सकूं इसलिए याद किया है। तो यह शास्त्र हमारा अपना है। ये ठीक है कि बीच के काल में हमारे यहाँ इसमें जो सतत अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, नई नई बातें सामने आती है, विज्ञान विकसित होता है तो सत्य का नए सिरे से पता चलता है, वो प्रोसेस बंद हो गई तो हम पिछड़ गए। पिछड़ने के दो कारण थे, एक तो हम चले ही नहीं, हमने चलना बंद कर दिया, हम पीछे हो गए। विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से आज के ज्ञान के बराबरी में हम हैं। एक जोड़ इसको देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यहाँ की कृषि इतने दिन चलती रही, सतत चलती रही। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशन का नियम इस नाते फैलो जमीन रखने का रिवाज है, तो वो कोई आपत्ति आई इसलिए नहीं होता है। हमारा किसान अगर 5 एकड़ उसके पास है तो 4 एकड़ जोतता है, 1 एकड़ खाली रखता है। अगले साल वो 1 एकड़ जोत में लाता है, 1 एकड़ और छोड़ देता है। ये उसके निरीक्षण में उसको ये पता है। परंतु अफ्रीका जैसी कुमारी भूमि में जहाँ कोई खेती नहीं हुई थी, पाश्चात्य लोग गए, उन्होंने अपने तरीके से खेती की और 400 साल के बाद उनको जमीन के बंजर होने की समस्या का सामना करना पड़ा। अब जब मैं कॉलेज में था तब इन बातों को कहना दकियानुसी माना जाता था। जैविक खेती की बात करना पिछड़ेपन का लक्षण था। लेकिन आज तो ये विज्ञान सिद्ध बातें हैं और सारी दुनिया उस ओर मुड़ रही है। और खेती के, पशुपालन के इन तरीकों में हम लोग सबसे सीनियर हैं। तो मुझे इतना कहना है कि आज जो आप कहेंगे, विचार करेंगे, 2 दिन सेमिनार चलने वाला है, कैसे और इस शास्त्र को आगे लिया जाए, जीडीपी बढ़ाया जाए। उसमें पहली तो बात ये होनी चाहिए कि इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान हमारे पास है, हमारी परंपरा का आज काल सुसंगत उपयोगी ज्ञान कौन सा है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान के साथ हमने जो सीखा है उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। हमने इतने हजारों वर्ष ये सब चलाया, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ऐसा विज्ञान है जो बिना साइड इफेक्ट के ये सारे परिणाम दे सकता है। तो उसको याद करना, उसको कैसे जुटाया जाए वो है, वो ज्ञान हमको पता नहीं, हमारे किसान के पास आज भी है, हमारे जंगलों में आज भी है, उसका उपयोग होता है, उसके परिणाम भी मिलते हैं। और कई प्रकार के प्रयोग जनता में चल रहे हैं। हम तो यहाँ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो बजट की बात आएगी, उसको तो टाल नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार में हैं तो खर्चा कैसे करना, तो सरकार देगी। तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है। रूपाला जी ने कहा वो भी सही बात है, परंतु बिना सरकार के जनता बहुत प्रयोग कर रही है आजकल, पशुपालन में भी और खेती में भी। वहां से भी हमको ये सारी बातें मिल सकती है। जैसा रूपाला जी ने कहा, वहां कांटेक्ट करना और उनके ज्ञान को प्राप्त करना। थोड़ा सा पद्धति में किसी भी जाते हैं तो पद्धति हमको थोड़ा रिजिड बना देती है। ये उस पद्धति का दोष नहीं, ये स्वाभाविक होता है।
हमारे संघ के काम को करते समय भी हमारी पद्धति है, उस पद्धति में हम ज़्यादा रम गए तो रिजिड हो जाते हैं। हमको एक बैलेंस रखना पड़ता है, लचीला अनुशासन बनाना पड़ता है। वैसे हमको थोड़ा लचीला होकर ये जो हमारे इस जगत के बाहर भी लोग हैं, उनके पास डिग्री होगी नहीं होगी, लेकिन वो यशस्वी प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव का ज्ञान उनके पास है, उसको स्वीकार करना ये वैज्ञानिकता है। रोनाल्ड रॉस को येलो फीवर कैसे ट्रांसमिशन होता है पता नहीं था, कलकत्ता में आकर कितने साल गवाए उसने, उसको सॉल्यूशन मिले नहीं। ऊब गया, 3 महीने छुट्टी के लिए अमेरिका में गया। टेक्सास में उसका निवास था। उस समय जो काउबॉयज थे, रैंचर्स थे, उनसे गपशप करते समय उसको ये पता चला कि इनकी ये मान्यता है कि मच्छर बढ़ते तब येलो फीवर बढ़ता है। अब ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं, प्रूवन फैक्ट नहीं थी, ये एक ओल्ड वाइज टेल ऐसा कहते हैं ना, वैसा था। लेकिन उसने उस पर काम किया कि ऐसा क्यों है, तो उसको ध्यान में आया कि येलो फीवर ये भी मच्छरों से ट्रांसमिट होता है। तो ये जो लोकल नॉलेज रहता है उसको अनसाइंटिफिक करके रिजेक्ट करना ये गलत बात है। परीक्षा के बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर वो सही नहीं निकला तो रिजेक्ट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि ये करेंगे तो और एक बात ध्यान में आएंगी कि सब बातें एक दूसरे से जुड़ी है। अभी तो हम वापस जा ही रहे, यानी मशीन की खेती बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं। आज के तारीख में भी 65% जो किसान है वो तो बहुत छोटी ज़मीन वाला, नॉन इरिगेटेड लैंड में खेती करने वाला है। उसके ये मशीन की खेती पुराती नहीं, उसको ये फर्टिलाइजर होकर पुराते नहीं, उसके चलते वो कर्जे में दब जाता है, आत्महत्या करता है। उसको अगर उसको समझ में आए इस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिखाना है, वो अपनी खेती को सस्टेन कर सके और लंबे समय तक उसकी जमीन खेती को सस्टेन कर सके, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। उस किसान के लिए आज भी बैल महत्वपूर्ण है, इसलिए गाय महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ दूध का व्यवसाय तो कभी था नहीं, पहले दूध बेचा नहीं जाता था, दूध दिया जाता था। हमारे यहाँ जो ब्रीड्स है, देशी ब्रीड्स, सबके सब दूध देने वाले नहीं है, कुछ है दूध देने वाले, अच्छा दूध देने वाले हैं, और आज भी वो कॉम्पीट कर सकते हैं, ऐसा उनको फिर से तैयार किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रीड्स बने हैं वो उस इलाके का एग्रीकल्चर ध्यान में रखकर बने। हमारे यहाँ विदर्भ में गिर गाय एग्रीकल्चर में नहीं चलती, यहाँ का जो गौरव है वो यहाँ की खेती में वही चलेगा। धान की खेती में भारी वजन के साहिवाल वगैरह ब्रीड नहीं चल सकते, उसमें हल्के वजन की ब्रीड चाहिए। हमारे यहाँ हजारों वर्षों के हमारे किसानों के, पशुपालकों के प्रयोग से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली नस्लें खड़ी हो गई। हमको इस दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। शास्त्र हमारा वैश्विक है, उसके टेक्स्ट बुक वैश्विक हो सकते हैं, विश्व में उसके बारे में जो ज्ञान है वो हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमको अपनी परिस्थिति में करना है। हमको भारत केंद्रित सोच के आधार पर सोचना चाहिए, और जीडीपी बढ़ सकता है उससे भी, क्योंकि इसी सोच को लेकर ईस्वी सन 1 से लेकर तो ईस्वी सन 1700 कुछ तक हम दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी वाले, इकोनॉमिकली नंबर 1 देश रहे। उस समय हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इंडस्ट्री और कॉमर्स भी एग्रीकल्चर सेंटर्ड था। तो ये बात जीडीपी बढ़ा नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हमको थोड़ी अपनी दृष्टि को भारत केंद्रित करके इस बात को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात है
कि इस इंटरडिपेंडेंस को समझना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर विकास करना है तो फोकस चाहिए, और फोकस चाहिए तो फिर अलग काउंसिल चाहिए। आपने जो बातें रखी है उस सब का मैं आज यहां सुनने के पहले से समर्थक हूं, क्योंकि हम वो अनुभव करते हैं, आप लोग भी अनुभव करते हैं, और मैंने भी 1 साल अनुभव किया है डॉक्टर रहकर, एक्सटेंशन ऑफिसर था मैं, इसलिए मुझे पता है। और मिलते रहते हैं मित्र, तो ये सारे दुख दर्द मैं भी सुनते रहता हूं, और घूमते समय वो आंखों से दिखते हैं। सॉल्यूशन इसका आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि व्यक्तिशाह में कुछ लोगों को जानता हूं जो सरकार में है, रूपाली जी जैसे, तो मैं ये जानता हूं कि इनका फोकस कुर्सी पर बना रहना केवल नहीं रहता, वो वहां होना ही पड़ता है, उतना ही उनका है, लेकिन गए हैं तो कुछ करके दिखाना, और करके यानी अपना ही कीर्ति बढ़े ऐसा नहीं, तो और 10 लोगों का लाभ हो ऐसा कुछ करके दिखाना, ये उनका स्वभाव है। मैं किसी पार्टी की व्यक्ति की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरे वो मित्र है, मिलते रहे, परिचित है। जैसे मेरे यहाँ बैठे हुए कुछ मित्रों के बारे में मैं दुनिया में बता सकता हूँ और बताता भी, वैसे उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा है, इसलिए यथावकाश ये बातें होंगी। वो अलग अलग, सरकार इतनी श्रीमंत नहीं होती, सब विभाग पैसा मांगने लगे तो डूब जाएगी। ये हो नहीं सकता, किसी भी देश में नहीं हो सकता। तो पब्लिक पार्टनरशिप ये करनी पड़ती है, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन सारा करते समय ध्यान में रखिए कि दृष्टिकोण हमारा ये होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अलग अलग होना पड़ेगा। जैसे एक फीटस रहता है तो पहले तो एक ही सेल रहती है ना, उसकी 2 होती है, फिर 4 होती है, 8 होती है, 32 होती है, 64 होती है। उसके बाद उसमें वो एक स्ट्रीक आता है जिससे नर्वस सिस्टम शुरू होती है। ऐसा करते करते ऑर्गन्स, सिस्टम्स, ये सब बन जाता है। रूप अलग अलग है, ये उंगली और ये मेरी आंख मिलती नहीं, स्थान अलग है, काम अलग है, रूप अलग है, लेकिन हम सब एक शरीर से जुड़े हैं। तो अपने देश का पशु विज्ञान, अपने देश की कृषि, अपने देश की आर्थिक अवस्था, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की खाद्य सुरक्षा, अपने देश के लोगों की नीतिमत्ता, ये सब बाढ़ एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें। और इसलिए विचार करते समय हमको इन सब संदर्भों का ध्यान रखकर विचार करना पड़ता है। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हैंडर मोस्ट, ऐसा अप्रोच यहाँ नहीं चलता। ये राष्ट्र जीवन है, ऐसा विचार आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि ये ज्ञान पहुंचता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हमने पहुंचना शुरू नहीं किया, इसलिए नहीं पहुंचता है। एक्सटेंशन विभाग सर्वत्र है, सरकार में भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है, लेकिन जो मैंने बताया एक मानसिकता बनती है कि अपने प्रोसीजर में इतना है, अपने नियमों में इतना है, इसके बाहर जाना नहीं। उपयुक्त बाहर बहुत है, जो हमारे सिस्टम में कैसा बिठाना, ये हमको सोचना है। तो हमको जाना है, देखना है, लोगों को बताना है। दूसरी एक बात मेरे ध्यान में आती है कि भाषा का बड़ा अवरोध है। आज का हमारा आधुनिक पशु विज्ञान का सारा ज्ञान अंग्रेजी में है। हमारे किसानों को समझ में नहीं आता, उनके पास एक टूटी फूटी टर्मिनोलॉजी है, वो उनकी भाषा में, वो हमको समझ में नहीं आती। तो अभी नई शिक्षा नीति ने तकनीकी विषयों में भी स्वभाषा के प्रयोग का काम आगे बढ़ाया है। अभी बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है कि भाषा तो अपनी भारत की होगी, उस प्रांत की होगी, टर्मिनोलॉजी टेक्निकल है वो पुस्तक की होगी, अंग्रेजी को अंग्रेजी होगी। लेकिन हमको भी अपना विषय समझाने के लिए एक्सटेंशन के लोग जाते तो ये करना ही पड़ता है। तो थोड़ा हमको ये एक करना पड़ेगा, तब ये ज्ञान लोगों को अपना लगेगा।
इस ज्ञान की समझ भी बढ़ेगी। तो ये कैसे किया जाए, इसको भी सोचना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत है, लेकिन उसके मास्टर आप हैं। मैं वेटरनरियन हूँ और जितनी पैथोलॉजी पढ़ा हूँ वो सब स्मरण में है मेरे, लेकिन मैं अभी रूटीन में नहीं हूँ। अप टू डेट आप है और आपका अधिकार है, परंतु करते समय कुछ बातें इनका ध्यान हमको रखना चाहिए। तो इस सेमिनार में से ये सारी बातें होगी। एकदम सबका सब आज हो जाएगा ऐसा नहीं, इसको आगे की गति मिलेगी और आप सब लोग मिलकर इस शास्त्र को देशोपयोगी और काल सुसंगत बनाकर, कभी समय था कि हमने विदेशों से फिर से सीखा। आने वाले 30-40 वर्षों में हमारी ज्ञान की स्थिति ये बननी चाहिए कि विश्व के देश जैसे पहले तक्षशिला नालंदा में आते थे, वैसे यहाँ पर आए। नागपुर वेटरनरी कॉलेज में पढ़ने के लिए विदेश से लोग आए, उनकी कंपटीशन हो। यहाँ सीट्स कम है, उनका नंबर ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़े, लेकिन सब लोग प्रयास करें कि हमको एडमिशन भारत की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मिले। ये स्थिति आ सकती है। मैं सब क्षेत्रों में वेटरनरियंस का जो ये मेरिट देखता हूँ, कैपेसिटी देखता हूँ, कॉन्फिडेंस देखता हूँ, उससे मुझे लगता है कि ये आ सकती है। नॉलेज भी है उसकी, तो पहले कभी नहीं। एक पशुपालक था, उसने केवल अपने पशुपालकों को ठीक किया ऐसा नहीं, उसने पूरे देश के राजनीति को ठीक करके रख दिया बहुत पहले। उनको हम गोपाल कहते हैं। तो एक क्षमता है, क्योंकि जो बोल नहीं पाते और उनका भला करने जाओ तो लात मारते, सींग मारते हैं। ऐसे लोगों का भी हित करने का शास्त्र हमको मिला है। हम ये कर ही सकते हैं। नॉलेज के मामले में हम कहीं से कहीं कम नहीं है। आज के विज्ञान के नॉलेज में भी अब हम लोग आगे हैं, और इसलिए इस दृष्टि से सोचकर ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़े। आपकी मांगों से मैं तो पूरा सहमत हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ आने के पहले रूपाला जी को बताया था, लेकिन वो होगा धीरे धीरे। मैंने इसी बिल्डिंग में हमारे गुरुजनों के ओर से ही एक वाक्य बार बार सुना है, द गुड साइंटिस्ट्स डोंट कंप्लेन अबाउट देयर लेबोरेटरीज। एडिसन के पास कौन सी लेबोरेटरी थी, ऐसा हमको बताते थे। उसके पहले मुझे मालूम नहीं था, ये यही सीखा हूँ। अगर ये सीखा हुआ ज्ञान काम आता है तो हम इन सारी बातों का प्रयोग करें और कुल मिलाकर देश को आगे ले जाएं। आपको उपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं, मैं आपसे सीखा हूँ। इसके बाद भी आपने मुझे बुलाया, भाषण करने को लगाया, और मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुन लिया। इसलिए आपका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, फिर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्कार करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। बात सर, आपको सुनना, हर समय सुनना, एक आपके विचारों को अवगत कराना, आपके विचारों को सुनना, ये हमें हमेशा से मंत्रमुग्धता की तरफ ले जाता है सर। तो आपका यहाँ पे प्रेजेंस और आपने जो भी बताया सर, उनको हम आचरण करना चाहेंगे सर। इसके बाद में मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर शिरीष उपाध्याय सर को, जो चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और कन्वीनर भी है, फॉर वोट ऑफ थैंक्स सर, प्लीज़। Good afternoon, one and all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. It deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this inaugural function of 20th anniversary to our honorable chief guest and esteemed alumni of this college, Dr. Mohan Bhagwat ji, Sar Sanghchalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Nagpur, for his words of wisdom and blessings. Today we got an opportunity to hear your thoughts again, sir, and this will surely be going to encourage us in future events. I express my heartfelt thanks to guest of honor, Honorable Shri Purushottam Rupala ji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, for kindly accepting our invitation and gracing this inaugural function.
I am grateful to Honorable Pro-Chancellor and Minister of Animal Husbandry and Dairying, Shri Sunil Kedarji and Honorable Bharneji, who were supposed to be here, but unfortunately because of some important assignments, they are not here today. So I am thankful to them also for guiding us as always. I express my sincere thanks to Chief Patron, Colonel Dr. Professor M. Paturkar sir, Honorable Vice Chancellor MAPSU Nagpur, for his enthusiastic support and guidance in conduct of these 2 days NAVS convocation. He has been encouraging all of us all the time, and he has been a great source of inspiration. I am thankful to NAVS India, all steering committee, for giving us opportunity to hold this NAVS 2022 here at Nagpur Veterinary College. I am very much thankful to Honorable Dr. V.R. Prakash Rao, President NAVS New Delhi, Dr. Varshne sir, Vice President, Dr. Gupta, Dr. Patnaik. I am also thankful to Dr. Tarun Sridhar, former Secretary ADF Government of India, and also the Secretary General, Dr. M.L. Sharma, Secretary General of NAVS New Delhi, for giving this opportunity. Thank you very much, sir. I am thankful to Honorable Dr. Dakshinkar sir, alumni of this college, and Honorable Vice Chancellor of Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu University, Durg, Chhattisgarh, he also the VCI member. I am very thankful to you, sir. It's not possible to thank everyone for such an appreciating involvement and gracious present, but still a few names I would like to take. I take this opportunity to extend sincere thanks to Padma Shri Dr. M.L. Madan sir, Padma Shri Dr. K.K. Sharma sir, Governing Council members of NAVS, all the NAVS fellows, associate fellows, and the members, the deans and directors of different universities, ICR officials, our executive council members, Dr. Sandeep Ingle and Dr. Dudalwar. Thanks are due to our founder, Vice Chancellor, Dr. Sherikar sir, who is here. He has been instrumental in shaping of this university. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheel starts rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated committee members, staff, faculty and students of Nagpur Veterinary College. I would like to take part who has generously helped besides other sponsors. I must mention our deep sense of appreciation and thanks to all our resource persons, guest speakers, chairman, co-chairman and rapporteurs who will be delivering their precious knowledge and sharing their experiences with us in these 2 days. I also thank the print and electronic media covering this event. With these warm words, I move to the end of the inaugural program. Please have a wonderful staying at Nagpur. Enjoy the deliberations in this convocation cum convention. Thanks one and all. I conclude the inaugural program with the permission of chair and request all to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की
lunch. Lunch is served just beside them. So all